नहीं अंडरस्टैंड कर रहा डिस्कॉर्ड, या डिस्कॉर्ड को समझ नहीं आ रही, या फिर किस तरह क्या चैनल्स की ज़रूरत है, तो वो एक फाइनली वीडियो रेडी हुई है. आई विल पोस्ट इट इन द कोर्सेज. इट्स नॉट अ बिग वीडियो, 8-9 मिनट्स की है, but I'll post it in the Discord courses, in the courses, so that one is ready. I'm working on a cash offer, okay, video. So it's going to be very lengthy, but उसमें मैं एक हर स्टेप में स्पेसिफिकली जाके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आई थिंक इट बी वेरी यूजफुल जस्ट इन केस कि आपको अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो आप उसको देख लें. ओके. जब वो चीज़ें आ जाएंगी तो फिर मैं जिस तरह रोज़ एक तरह से आपको वो देता हूँ ओवरव्यू, तो हो सकता है वो मैं ना दूँ, एंड देन वी विल गेट इनटू इट. Check my messages, please. Yes, Hamad, your deal is actually just we're just talking to a couple investors to finalize things. I'll let you know when it's finalized, and I'll check your messages as well. For now, what I'm thinking, अभी के लिए ना मैं डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट डील्स पे बात करते हैं, सो दैट एक हमको कोई मिस ना हो, और दूसरा ये कि हमको ओवर टाइम ना जाना पड़े ज़्यादा. ओके. अगर कोई क्वेश्चन है जो इट्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, आप आस्क कर लें, पूछ लें, एंड आई विल रिस्पॉन्ड. मगर अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है तो फिर हम डील्स की तरफ जाते हैं. आप एक दूसरे की डील देखें, समझें कि क्यों कौन सी डील अच्छी नहीं है और क्यों कौन सी डील अच्छी है. मेरे बताने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए. आपको ऐसा सोचना चाहिए जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खोली, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी बोला नहीं है, मगर मैं उसको देख रहा हूँ. तो आपको देखते हुए अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाई इस डील में ये मसले हैं, ठीक है, या स्टूडेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, राइट. फॉर एग्जांपल लोकेशन आ गई, या फिर स्पॉट क्राइम आ गया, या फिर अंदर घर की क्या हालात है. तो इन सब चीज़ों ध्यान ताकि आपको पता चले, आप खुद एडिट ऑडिट कर रहे हो उसकी किसी की भी डील का. ओके. um, let me go into the Hamad's deal right now, and then we'll okay, he said, Ahmad, thank you for sharing. We cannot pay off, they cannot pay off their loan only 10% with only 10% down. Let me know if you have a different structure you can propose. It's Hall Austin Hall का क्या कितनी प्रॉपर्टी है? I mean, ये 3 प्रॉपर्टीज वाला बंदा है हमाद. Hamad, you can't be offline, man. When I'm talking about you, you're offline. Okay, I'll move into the next person. Let's see, Harry has something. Harry said Laura number list price is cash. Okay, that's one before. May I know what did you say about Hussein property? I didn't listen. So Hussein property, I'm not sure if it's Hussein is here. Hussein property, this one you're talking about, right? Like this 4061. So what I said that I'm gonna go ask the investor if the 45,000 is a good cash offer or not. Okay. So the reason being कि हमें कम से कम ये लगी हुई 60 की, right? Multiply by 0.7. तो कम से कम हमें 42 पे तो चाहिए ये घर. But it's in a good condition. I think it's only missing the paint. Okay, so it's in good condition, it's only missing the paint. So can we do it? Yes, we can. I think we can. I talked to the investors, couple investors that I talked to. They said no, they wouldn't be interested in this at 45. ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैं जो हूँ मुझे अभी भी 2,000 कम, क्योंकि क्लोजिंग कॉस्ट उन्होंने पे करनी है, तो कम डिट्रॉयट की क्लोजिंग कॉस्ट तकरीबन 4,000 होगी, तो वो ऑलरेडी 70-80% के करीब आ जाएंगे. ओके, बट nonetheless we can do something, because इसका जो रेंट है, let me check, इसके रेंट पे हमारी बात हो सकती है.
क्योंकि 60,000 का घर है, अगर इसका 1000 भी रेंट है ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस. Yeah, so if it's 1000, let me actually make it even better. Make sure that house is 3 bed 1, 3 bed miles 1. Okay, so I'm getting 1.1, 1100 minimum. Yeah, 1.1. So even if I go with 150, I think my cash and cash will be decent. Or we also need to check how many houses are selling next to it. Um, 57, 58, 60. So ये हमारा घर है. Oh, is it attached? Can't be attached. So 24, 42, 17, 45, 45. Just sold. When did it sell? Sell for 60,000. Okay. ये घर 60,000 का सेल हुआ है. घर की कंडीशन ठीक है, ऑलमोस्ट नई कंडीशन है. तो इसका मतलब अगर हम इस घर को लेते हैं 40 का. This was the place. Yesterday deal was हुसैन. हुसैन, इसका रेंट पता है आपको? आपके जो प्रॉपर्टी है, कितना इसमें कोई रेंटर रह रहा है या फिर वेकेंट है? हैरी, आपको पता है इसके बारे में? हैरी इज नॉट हियर. He's not here. Okay, well, हुसैन, ये जो घर आपकी प्रॉपर्टी थी कॉल्ड वेल पे, उसका रेंट पता है आपको? 3 बेडरूम का. गाइस, अदर थिंग आपको ये भी सोचना है कि जब जो भी 3 बेडरूम के हाउसेस होते हैं ना, 3 बेडरूम, वन बाथ और 2 बाथ के, यूजुअली होता है 12 से 1500 के दरमियान. ये घर 700 स्क्वायर फीट का है. तो इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस with 3 bedroom, so it's a very small space. But 3-1 इसके साथ के अगर 11 पे जा रहे हैं, then we cannot do anything. So 1100 would be the one probably we go for. Okay, I think for this, all we have to do, in my opinion, is get him under contract. I think this is good enough for what we need. Get him under contract, and then we can go from there. Okay. Hopefully we don't have to cancel the contract. So hopefully we don't lose money. But if nobody buy it, then we'll have to see. But I'm a little bit nervous because it's a small house one. It's not at 70% rule. But the good thing is the price is low. Okay, so it's like $42,000. Investor might not have so much issue. And second, it's a 3 bedroom, which is a plus sign. And third, house is in a new condition. No issue with it at all. Just paint that's needed. So I think yeah, it could be good. So let me get it figured out a little bit. Rental estimate 2,200. I don't believe in, man. There's no way the rental is gonna be 2,200. The maximum it's gonna be is 1,100 maximum. Detroit doesn't have that many that expensive rents.
Give me 1 second. Okay, so this is the house. या हमने कल लोरेन से बात करी थी, आज लोरेन को कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें भेजनी है. Heather, you might need to be muted. I'm just going to take quick note and let the team know that go ahead and send the contract on this. What is going on? So cash 45. Hussein, did you tell her that I'm gonna pay the closing cost? This girl? Did you tell her I'm gonna pay the closing cost? Or not yet? So cash is 45,000. DSCR. I'm working on one more calculator, guys. I checked it, man. I checked it. It's 1100. I'm working on one more calculator, guys. जिसमें जो अब जैसे ये जो calculator है ना, डील एनालाइजर का, ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस एंड सब टू एंड हाइब्रिड का, ठीक है. एक कैलकुलेटर वो चाहिए कि अगर बंदा सेल्फ फाइनेंस नहीं लेता, इन्वेस्टर सेल्फ फाइनेंस नहीं लेता, वो जाता है बैंक के पास और बैंक से लोन लेता है, तो क्या डील उसको मिलेगी. हमें उसका भी कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा ताकि जो है आप, क्योंकि ये वाला घर है ना 45,000 का, क्योंकि ये इतना सस्ता है कि हो सकता है वो बैंक के पास चले जाए, क्योंकि इस पे अब लोन उसको 60% भी लोन मिल जाए तब भी 45% का घर है, ये 15 साल में कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर वो जाता है तो उसके लोन के साथ क्या कैश ऑन कैश रिटर्न आएगा, हमें वो भी निकालना होगा, राइट. तो send contract POF and credibility. Okay. I not mentioned her. Okay, so what I will do then, if you haven't mentioned her, I will talk to her today. I told her that I'm gonna send you something today, so I'm gonna send the credibility bank statement through the portal, secure portal. उसके बाद हम उसको ये दो चीज़ें भेज के उसको बोलूँगा कि I wanna stick at 45 because I'm gonna stick at 42 because मैं जो हूँ आपका closing cost भी pay करूँगा, okay, and then we'll go from there. Let me see which number 313. Seven three three. Hey Lauren, hope you're doing well. My team is getting the paperwork ready.
I'm getting the POF and credibility ready to send you through email. I understand that the conversation you had with Anna, seller agreed for 45,000. What I was thinking is that I am okay to pay the closing costs of the Mr. Seller side. Mr. Love from Bangladesh. Thank you, brother. Um, Seller side. And would like to be at 42,000 for this property. Hello, I hope you're doing well. I'm getting the POF and the credibility ready to send you. Send you through email. I understand the conversation you had with Anna that Mr. Seller agreed for 45 for the property at. I think that I'm okay to pay the closing cost for Mr. Seller side. Um, excluding agent commission. Something Mr. Seller would entertain. We had a quick chat yesterday on this property. Okay, I sent a text to Lauren. Lauren को बोला है कि भाई मैं closing costs pay करूँगा. अगर मैं closing costs pay करता हूँ तो I think it's going to be $2,000 anyways of closing costs हमको pay करनी है. तो अगर हम closing costs pay करते हैं तो technically we will be at $47,000. बट अगर क्लोजिंग कॉस्ट नहीं मतलब अगर उसको बोलते हैं कि उसकी क्लोजिंग कॉस्ट हम रिमूव कर देते हैं और 2,000 यहाँ से कम कर दें, then हो सकता है would be a good deal. Okay, let's hope everything goes well. But yeah, so far it's okay. So far it's okay. We can get this done, inshallah today. Hopefully somebody will pick this up. I just worry the house is very small. It's a very small house with 3 rooms. Hopefully it'll be fine. Okay, so Anna, basically I'm just waiting on her test. When she respond, I'll let you know, and we go to the next person for now. Okay, how is taken care of? Should I ask for the interest rate? Okay, Hamad is back. Hamad, I have your screenshot open with the Hall Austin. Thank you for sharing. They cannot pay off their loan with only 10% down. Let me know if you have a different structure you can propose. This is for them. Okay, the 10% down at 19 figure. So guys, I'll show you what I'm looking at. This is the property we are looking at. Owner का message आया और agent का message आया that owner cannot pay off the loan with this down. Okay, वो बोल रहा है कि 190,000 पे वो owner नहीं pay कर सकता अपना loan. So तो फिर आपको पूछना चाहिए है कि कितना लोन है exactly. उसने ये बताया आपको?
अगर नहीं बताया तो आपने ये पूछना है, आस्क हिम एग्जैक्टली हाउ मच इज़ द लोन लेफ्ट। या तो आपसे पूछें कि um, उससे पूछें कितना लोन रह गया है, एंड क्या परसेंटेज है लोन की, जो आपकी नॉर्मल 3 सवाल होते हैं, राइट। लोन कितना रह गया है, परसेंटेज कितनी है, मंथली पेमेंट कितनी है, ठीक है। हमें 2 सवाल के आंसर मिल जाएंगे। एक ये सवाल कि अगर हम उसको मॉर्गेज टेक ओवर कर सकते हैं इस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, यस और नो, ठीक है। यूजुअली मुश्किल होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी से मॉर्गेज टेक ओवर करना, ठीक है, बट वी कैन स्टिल डू इट। और दूसरा सवाल ये कि जितना कितना लोन रहता है जिसको हम डाउन पेमेंट लेके आए, कि वो हम उसको पूरी पे कर सकें, समझ रहे हो, कि हम कितनी डाउन पेमेंट लेके आए कि वो पूरी डील में से निकल जाए, और फिर वो हमारे साथ हमारे साथ सेलर फाइनेंस का एग्रीमेंट कर ले। ओके, सो दीज आर द 2 रीजंस, 2 क्वेश्चंस हमको हमको चाहिए उसके साथ। ओके, I'll check your one more deal before that. POF and valid ID sent to share this agent. Yes, this agent को हमने कार्डला को कॉल करी थी कल। Are you free for a quick call? Oh, Cardwell is calling. Okay, one second, guys. Hey, how are you? Very well. Clarify with you. Yeah. You guys, you're not an agent, right? No, we don't have an agent. We usually just have Okay. attorney basically that helps us out. Okay. Okay. So then that saves him on paying a Correct. buyer's agent commission. So you just taking care of closing costs and being at 42 Yeah. would make sense then. So Okay. 42 for his close, like we will close, of course, our side for sure, but we want to do it his side as well, so that we can bring the purchase price down for us, right? And we'll Okay. not come with an agent, so you don't have to pay for that. Now it's up to you if you wanna represent us, you, or if I don't know if Detroit allowed the dual agency. If that is a possibility, you can kind of present us so it have a little bit of a better commission from your perspective. But if you just Okay. wanna do one side, that's okay too. That would be perfect actually if you're open to a dual agency. Yeah, so Um, we are open. It's just that Mr. Seller will have to pay our cost then, right? um, oh, wait. So you're saying, okay, wait. Tell me, explain that again. For sure. So basically, what I'm saying is that usually Mr. Seller covers the agent commission from our side as well, right? From the buyer side. So Right, right. we are not coming with an agent. Um, we should be fine without it. But if it helps you, you're able. If you want to present us, you can. However, Mr. Seller would have to cover that fees from his side. Got it. Got it. So, you obviously he'll be paying the commission for both sides, but you'll still take care of the other closing costs, not associated with being an agent. Yeah, so we will cover the closing cost for both sides, with or without you being presenting us, right? Now, if you are Yeah. presenting us, it's just that Mr. Seller will have to pay the both side. Maybe Right. you can have a discussion with him if he's okay with the dual agency, but you can then, in that case, represent us and then him at the same transaction. Perfect. Okay, cool. And then so yeah, let me give him a call, Yeah. and then we can go from there. And then you say you're working on the proof of funds, Yes, I will send and you. Um, I will send you a contract as well. Has it been looked over by the? It's like a sample thing. So I don't know if you guys have a your own contract that you can send me that we can sign, or I can send you mine. Whatever works for us for you. okay, okay. And actually, if I'm do a tax agency, I can actually draft up the purchase agreement on my own Okay. and send it to you. Okay. So that there's no confusion there. Yeah. And then, but let me talk to him first. And then with this is a cash transaction. So Yeah. what's the closing time? Like a Yeah. 7-day So close? we will go with cash. I will need about 7 to 10 business days for inspection. We are currently doing a couple renovations, rehab projects in Detroit, so we're a little bit busy. So I need about 7 days to 10 days for inspection.
Other than that, there is no financial contingency or anything like that. Okay, perfect. All Okay. right. And then is the inspection more for informational purposes? Yeah, just to make sure, because I'm a little bit confused on the roof side of the property. So we just want to, because I see Okay. a little bit of a dent in the roof in the picture. So I just want to send someone in to kind of confirm it's not a big deal, there's no leakage and things like that. Other than that, property looks in pretty decent condition, so we should be good to move forward. Okay, perfect. Let me give him a call, Okay, and then I'll get right back with you on that. Okay. sounds good. Thank you so much. We'll Okay. chat soon. Thank you. Bye Okay. bye. Bye bye. Okay, so that was Anna's and Harry's um, agent. Like, see, I told you guys, this is a trick. आपको ये ट्रिक यूज करनी लाजमी होती है कि टेक्निकली तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, मगर एजेंट खुश हो जाता है। अगर एजेंट को आपने खुश कर दिया, क्योंकि आप सोचो उसके पास 50 ऑफर आई हैं, ठीक है, सारी ऑफर्स आई होंगी। अगर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है 60 की, सारी ऑफर आई होंगी 40 के अंदर अंदर, 45 से ऊपर नहीं गई होंगी और 40 से नीचे गई होंगी, राइट। और एजेंट का कमीशन होगा आई डोंट नो 2500, राइट। अगर और एक बंदे का एक साइड का, ठीक है, जो कि सेलर के साइड का होता है। अगर बायर के साइड उसको एजेंट चाहिए, कमीशन चाहिए, तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और हमको एग्री करना पड़ेगा कि आप हमको रिप्रेजेंट करो, तभी आपको कमीशन देंगे। मगर मज़े की बात यह है कि एजेंट का कमीशन जो कि सेलर के साथ है और बायर का कमीशन जो कि बायर के साथ है, दोनों एजेंट का कमीशन सेलर पे करता है, ठीक है। तो फिर हम एजेंट को बोलते हैं कि भाई अगर आपको हमको ज़रूरत नहीं है एजेंट की, हमारे पास अटर्नी है, लॉयर है, वो करता है, ठीक है, ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है। मगर आप हमारे साथ को भी हमको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो इसी डील में, तो आपको नाउ 5,000 मिल रहा है, ठीक है। 2500 फ्रॉम द सेलर एंड 2500 फ्रॉम द बायर, बट टेक्निकली बायर के साइड से नहीं मिल रहा है उसको, उसको एज अ डुअल एजेंसी की हिसाब से उसको मिल रहे हैं सेलर से ही। तो सेलर वो 40,000 में से 5,000 मिस्टर एजेंट को देगा जिसने ये डील बनाई है। तो अब एजेंट के पास 10 ऑफर पड़ी हुई हैं, 10 में से 10 ऑफर उसको पैसे बना के देंगी 2500 के, ठीक है। एक ऑफर पड़ी हुई है जो उसको 5,000 बना के देगी, जो कि इसके डबल का है। तो अब आप खुद समझ सकते हो वो किसकी तरफ पुश करेगी। भले वो जानबूझ के ना करे, मगर एज अ माइंड वो पुश करेगी कि यार मैं इस ऑफर को कबूल कराती हूँ ताकि मुझे कम से कम डबल मिल जाए। चलो वो बोलती है कि ठीक है मिस्टर सेलर डबल ना दे, मुझे 5,000 की जगह 4,000 दे दे। वो 1,000 का डिस्काउंट देती थी मिस्टर सेलर को, तब भी वो 2,000 1500 ज़्यादा बना रही है जो उसको पहले नहीं बनते थे, राइट। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये कार्ड्स और क्लोजिंग कॉस्ट का कार्ड दोनों आपने एंड में प्ले करना है, ठीक है। अब जैसे 45 पे वो अटक गया है, हम बोल रहे हैं 42 पे आओ, नहीं समझ रहा, हमने बोल दिया ठीक है हम क्लोजिंग कॉस्ट भी आपके साइड की पे करेंगे। तब बोलता है ठीक है वो 2,000 की तो क्लोजिंग कॉस्ट वैसी होगी, तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। बाकी बाकी एजेंट का वो खुद उससे बात करके डुअल एजेंसी कर ले। एनीवेज लेट्स गो बैक टू दिस प्रॉपर्टी, not this one. Okay, so that was Hamad's property. I need to, yes, so I'm gonna just quickly reply Hamad, yes, ask these 3 questions. Okay, proof of fund, valid agent ID, Carla. Yeah, Carla we need to call, and then I'll go to the next person. I think I called Carla. Carla 4. Interesting, मैंने कॉल नहीं करी इसके ऊपर। Hamad, are you here? Paste.
Okay. Carla. Yes, I did text her. I left you a voice note, but she never called me back. So, okay, I'm gonna call her, Hamad. Um, Hamad, do you know what kind of offer they're looking for? They're all cash offers, all three properties. So that's 80 Harley Drive. All rented, very nice. All rented. That's, oh, it says pending. Why does this pending? She's saying before confirming, she needs the POF and ID. Yeah, so she's probably worried. I'll call her. Um, she's probably worried that for scam or something. Hello, Hello, is this Carla? this is Carla. Hey Carla, this is Sayed. I believe you've been speaking to Hamad, one of our accusation agents, on the property on Bonnie Ave and Hillside and the last one, I think Napier. I can't remember the name. Does that ring a bell? Yes, I have Napier for sale. Yeah, we were just running number on it. I just opened it on Zillow. Looks like they're under contract. Yeah, are they? Not on Napier. That's a different. You talking about 1925 Napier? No, no, 3679. Oh yes, 3679 is on the contract. Yes, it was on the contract Saturday, and then we came off and went back on the contract. It's the same buyer. It's just that we had to change some stuff over, and then I had to remove it and put it back up on the contract. Oh, okay. Well, congratulations. Where are you in that process? They're good to go for all three properties, or they're just taking two? Right now they just taking two, so I only have a contract for two. Hillside is still available. Oh, okay, okay, I see. So Hillside is for sale. The rest two, I say, under contract. Okay, sounds That's good. correct. Um, and Mr. Stetter is only interested in sort of the cash conventional offer, or is he open to other, like if I were to come in, let's say over asking by 10, 15,000 and do like a 84 months payment, is that something he'd be interested? Right now, the seller told me they only want to let everyone get their own loan with them, with the Okay, financing company right. because, they renting it out, so they getting the money now. The tenant pays on time, so as far as that goes, that's why they said they wasn't in a hurry to sell. So Okay, if then someone else want to come in and buy the property, they just want close out at closing, so that way it'll be cash or you can get. Sometimes you're able to get like a hard money loan, right, and right, they'll be able to do it. And I know, American Pride and different banks like Bank right. of America, and I'm trying to think Yeah, of one more that does that. And it's a lot of them that will do, hard money loans. sure, sure. Now, help me understand a little bit the condition of the property. Looking at the picture, I don't see any issue. Do you know anything that All you're right, and aware they of? keep it up. That's the reason why the other buyer was trying to do all three, but he just would say, "Let me do two, and if I circle back, then I'll see about that one if it's still available." And they didn't want to do all three at one time, but this is the Interesting. problem when they go in and they put the property up for sale. Then if the tenants call and say, "Hey, can you fix this?" Most of the time, Right, a right. good landlord, they're not gonna let a tenant stay in the house and something's broken. So Mm-hmm. that's what they do. But something cosmetic, if they tear it up, then it's most like they have to fix, something cosmetic. But they take care of the property and they say, well, we'll go over and pay me on and we'll do it because it's our house. So it's Mm-hmm. like that. So they'll Mm-hmm. take care of it, but that's what, home inspections are for. So Mm-hmm. you still have someone to come in when you go up on the contract and get somebody to do it for you if you're not here to be your eyes and ears
and let that person do it, take the pictures, and give you a home inspection report, and they do not mind that at all. Yeah, for sure. We have a very good connection with the management company and the inspector there. So we usually won't fly in to look at the property ourselves, but our inspector will. That would be the plan when we go under contract. About 7 days, we should be able to send someone in to have a look at the property. Now, the other two property and this one, you said it mentioned that it's all rented. Do you happen to know what rent they're getting? Is it Section 8? With the Section 8 is over 1,000 a month. One of them was 1,006, the one was 1,116, and that was on Bunny. And then the Okay. one on Hillside, they pay out of pocket. It's not on the Section 8. Okay. And they've been there, would prefer staying if, the new person that buys it allows them to stay, but they pay $900 a month, and it's on a month-to-month, their lease has already expired, so they just $900 a month. Okay, so 900 month to month. Do you Yes, know yes. if this property has been approved by Section 8? I'm not sure. Not sure, okay. They're not on Section 8, so I guess the tenant that's in there may not be able to qualify for Section 8 because, they have to qualify as well in order to get Correct. Section 8. Yeah, correct. Because I was wondering if the two properties they got it Section 8 got it approved and got the renter in. I was thinking maybe they did it with the Hillside as well, but they might have not. Okay, and like I said, as long as the tenant paying on time, they okay with that. So, and then they pay what they're supposed to pay. So, Sure. he's not, pushing it to be on Section 8 because, like I said, it'll be more for the tenant because if that tenant couldn't qualify and you get ready to put somebody else in it, then, that tenant will have to move in order to do that. Correct. And when will you know that everything is good to go with the other two properties? In 4 days. I should know at least by Monday. Okay. So that'll be it. My due diligence will be up. So then, if as long as everything going like it is right now, I should be okay. But anything could change, and so if so, I could keep your number, and and it'll be back on the market. If they change their mind, not buying both of them, or buy one and release the other one. But that's the way it is, and that's what we expect. That's why we give everybody a chance. To do. They feel comfortable and not be rustled to buy a home. Right. Yeah, so what I will do, I will have a chat with Hamad. We'll run some numbers on this as a cash offer or conventional, and kind of give you a kind of an offer on this. I would actually be more interested in buying as a portfolio because like I said, I have a good connection with the management companies. It'll be very, very easy for us to manage these properties from afar. But yeah, I'll send you the offer here for this one for now. And then hopefully by Monday you will let us know if it's gone through or not. Either way, we'll then discuss all three or just Hillside if they take it properly. Okay? Well, that sounds good. Yes, that'd be fine. So you can just send the information over to me, and I'll relay the message to the sellers, and that's what we want to do. So to make sure it's something that you want to buy, and I'm here for you if you see something else. Yeah, so for sure. Right now, Hillside is available. Yeah, I will shoot you a backup offer on that as well, for all three, and then on one as well, so that you just have something to back up on. Okay? That'll be fine. I appreciate you very much. No worries. We'll chat soon, Carla. Take care. Thank you. Bye-bye. Okay, goodbye. ओके सो कार्ला के ये दो घर है ना, तीन में से दो घर तीन में से दो घर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तीनों घर मैंने खोले हुए हैं। ऊपर अंडर कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग लिखा हुआ है एंड देन फॉर सेल। ठीक है, तो दो वो घर ख़रीद रहा है, एक नहीं ख़रीद रहा। आई डोंट नो व्हाई दैट्स अ केस। खैर ये तो हम इंस्पेक्शन सेंड करके पता चल जाएगा, क्योंकि अगर एक बंदा दो घर ख़रीद रहा है तो उसको इस वजह से भी हो सकता है कि सेक्शन 8, ये दो घर जो है ना सेक्शन 8 वाले हैं, गवर्नमेंट पे कर रही है, इनके पैसे रेंटर पे नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट पे करती है तो 3 बेडरूम का एक डिसेंट रेट है। तो अगर ये 10,000 भी से कम में लेता है 70,000, तो प्रॉपर्टी इज़ गुड। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको पैसे बनाएगी 70,000 में भी। ठीक है, मगर हम 70,000 में नहीं ले सकते, वो इस वजह से क्योंकि हम एंड इन्वेस्टर नहीं हैं फ़िलहाल के लिए। अगर हम एंड इन्वेस्टर होते और वो बोलता 70,000 पे फंस जाता, हम उसको कंसिडर कर लेते।
बट अभी हमें अगर जैसे हम कैलकुलेटर देखें तो हमें 0.7 की लाजमी हमें देना पड़ेगा। 80,000 का घर है तो मल्टीप्लाई बाय 0.7, नॉट 0.7, 56, 56, तो हमें इसकी ऑफ़र देनी पड़ेगी 56 की। ओके, हमारा basically what you need to do is you need to call, not call, not call, don't call because I already talked. Text this agent, okay? Hamad, you need to text this agent, tell the agent that will be interested in Hillside, again 90% off, sorry, 30% off. The property is 95, not 90% off, 95,000 times 0.70, okay? Go with $66,000 for this house, all cash. उसको बता देना कि we will pay the closing cost. Okay. Okay. So yeah. So tell him that we will pay the closing cost, and we don't have any agent. Okay. We pay the closing cost. We don't have any agent, and that being said, our property is gonna be at 66,000. Our purchase by 66,000. फिर एक नीचे आके एज अ बैकअप ऑफर आई विल बाय दीज प्रॉपर्टीज एट अ 70% ऑफ, 30% ऑफ एज वेल। उसको बोला नहीं 30% ऑफ, इसका कैलकुलेट करके जो नंबर आता है उस नंबर को सेंड कर देना। और बता देना कि ऐसे मैंने कॉल करी थी आज, आपसे बात करी थी, मेरे मैनेजर ने आपसे बात करी थी कि वी आवर कंपनी इज़ रेडी टू गो। ओके, मैं उसको बता देता हूँ, हे कार्ला, it was great chatting with you. I will had Hamad sent you an email with the offer on the hillside property along with the other two, just in case the contract fell through, as a backup. Um, it was great chatting with you. I will have Hamad. Excuse me. Let me know if you have any questions. Thanks. एक तो स्पेलिंग कार्डला की केस है। Sorry, voice to text typo. Okay. Hamad, you're all set, right? Anything else I'm missing from your side? Um, no, I got everything from your side. Okay. I'll go to the next person, which is Heather, I believe. Let me check. Um, looks like Fahim is next. Heather, I'll take you next, okay? Fahim, check my messages, please. Sure, I'll check your messages. Then I'll go with Heather. April 28, these are today. Assalamu alaikum Said bhai, कैरी की सेलर ने सेलर फाइनेंस ऑफर रिजेक्ट कर दी है, वो कैश की बात कर रही है, what can we do? Who's Carrie again? Carrie, C-A-R-I. Let me see. Yeah, Carrie, I'll have him prepare the letter of intent. Okay, yes, that would be great. Oh, I see. It's that the girl. Shoot, shoot. We were so close on this, man. Um,
फ़हीम भाई ये वही है ना जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेजा था, उसने बोला था कि मैं बात करती हूँ सिर से। ओके 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 ओके। तो अगर वो कैश सिर्फ रिजेक्ट कर रही है तो कैश पे वो बोल रही है कैश की बात कर रही है, व्हाट कैन वी डू? आई मीन वी कैन डू कैश। लेट्स सी व्हाट द प्रॉपर्टी इज। Just wrote Fahim deal and said property name. Oh, cash on this would be tough, man. That's $1.2 million property. That's a problem. That's a problem because cash would be tough on this one. इसकी 6 properties का portfolio था, and you want to do 0.6. Yeah, I remember this one, but I don't know how to do it then. The problem, guys, कोई भी घर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर वो घर अटैच है किसी घर से, तो अब इसके पोर्टफोलियो में ये वाला घर आपको दिख रहा है, डोर तो ये रहा बट ये अटैच है दूसरे घर से, ठीक है। ये एक मसला था हमारे लिए। और एक और घर है जिसमें ये मसला है, ये वाला। इसने पिक्चर यहाँ से काटी हुई है क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा घर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो दो घर है इसमें मसला है। व्हाट वी कैन डू Hamad then, give them the cash offer for this property, okay, but not for the condos. Condos पे नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिंगल फैमिली पे कर सकते हैं। इससे सिंगल फैमिली को अलग नहीं बताया हुआ। Okay, let me chat with Carrie. Let's see what's You've reached Carrie Kaufman with Compass Realty Group. Please leave a message and I will return your call as soon as possible. Thanks so much. Hey Carrie, hope you're doing well. We have been back and forth on the text and with Fahim as well, on the portfolio deal that we were kind of working on. Um, from what I've heard from Fahim, that the seller has rejected the seller finance, sort of the over asking offer. I want to know um, why that's the case. Maybe is it a down payment that we can increase, just so we can go in and take the whole portfolio with a six-figure down payment at least. Let me know. I'll shoot you a quick text as well. Whenever you have a time, you can send me a text or shoot me a voice note. That works just fine as well. We'll chat soon. Bye bye for now. Yeah, man, I think that was a good one because the rent was pretty good. द थिंग इज़, अगर हम इसको सेपरेट सेल करें ना, सॉरी, पोर्टफोलियो के अलावा सेल करें सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी, तो ये जो कॉन्डोज़ हैं ये बहुत मुश्किल से सेल होंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इस मार्केट में लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो कॉन्डोज़ में जाना और टाउन हाउसेज में जाना, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मगर क्योंकि ये पूरा पोर्टफोलियो था और उसकी एक डिसेंट कैश फ्लो है, 20% कैश फ्लो, कैश ऑन कैश रिटर्न आ रहा था, so then we said, okay, let's try this out. Hey Carrie, hope this message finds you well. Just wanted to follow up on the conversation on the portfolio. I have also sent you a quick voice note. Chat soon. The thing is, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ ना इस डील पे, मैं बोल रहा हूँ यार ये अच्छी डील थी, करनी नहीं चाहिए, मैं टेक्निकली ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
राइट? मुझे करना ही चाहिए, अच्छा नहीं माना, नो प्रॉब्लम, ओपन ज़िलो, टेक द नेक्स्ट हाउस ऑफर, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड वेट। आपने किसी भी प्रॉपर्टी से अटैच इमोशनली नहीं हो जाना कि यार ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसका कैश रिटर्न भी अच्छा है, ये मिनटों में सेल हो जाएगी, मुझे बस ये चाहिए, सब कुछ इसके अंदर न्यू है, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई हैव डन दैट। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, आई कैन शो यू, it's in Indiana, what's it called, it's a section 8 property, I can't remember the address. I'll show you. I've wasted so much time, guys, like back in those days. um, Indiana Avenue, something like that. Yeah, yeah, it was this one. Okay, the both of them responded. I'll tell you guys what they respond. This one, 410 as Indiana Ave. It's a multi-unit property. You cannot believe how how much I was in love with this property. इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहली बात तो ये, और मैं अपने लिए देख रहा था, राइट? ऐसा नहीं कि मैं आगे बेचने के लिए, अपने से मुराद कि मैं इसको लेकर किसी को पार्टनर बना के खुद लेने का कर रहा था, राइट? ये बाहर का है, लुक एट द आउटसाइड, हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स, लुक एट द इनसाइड, राइट? ये आपके पोस्ट है मेल वगैरह आने के, the floor, the thing, like everything, the wooden structure, और जिस जगह पे ये थी, oh my goodness, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कितना टाइम इस पागल सी प्रॉपर्टी पे वेस्ट किया है, और वो अभी तक लगी हुई है सेल पे, अभी तक उसको कोई सेल नहीं किया, जबकि मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो राइट, तो ये होता है कि अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओ ना किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी इमोशनली इन्वेस्ट हो, आप अपना सारा टाइम वेस्ट करके उसी के पीछे पड़े रहोगे, उसको कन्विंस करने करोगे, और वो बंदा कन्विंस होगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि वो इतने लो नहीं जा रहा। देन दैट्स इट, मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज है गाइस, आपको वॉक ऑन करना है, मूव ऑन करना है, ठीक है? तो बट अगेन मैंने मतलब इतनी कोशिश करी, यू कैन नॉट इमेजिन के, हर तरीके से उसको कॉल करी, मैसेज करी, ईमेलें करी हैं एजेंट को, बट नो, द सेलर वाज नॉट मूविंग। और मज़े की बात है, ये जो 18 बेड वाली प्रॉपर्टी है, इन सब में टेनेंट है, और इसका कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा, ये सेक्शन 8 की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसके जितने आप नंबर्स होते हैं, जैसे बॉक्स होते हैं, इसको मैच करते हैं, सारे बॉक्स मैच हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी में। बट अगेन, इफ़ आई डिडंट इन्वेस्ट दिस मच टाइम ऑन इट, जो कि मैं लूज़ कर गया एनी वेज, राइट? मेरा सारा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरी मेहनत भी वेस्ट हुई, और मैंने वो टाइम अपना वेस्ट किया जिस टाइम पे मैं कोई और प्रॉपर्टी पे मैं इसको जा सकता था। बट नन द लेस, दैट वॉज माई लेसन, ठीक है? तो इसी तरह अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो रही, आप वेस्ट ना करें, आप उसको पीछे डालें बैक बर्नर में, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ओके? Just an example, because I have done this bad, stupid things a lot of the time. Um, okay, I got a message for Fahim deal. I emailed Fahim yesterday. She's not willing to do seller financing. If you pay cash, she will sell them for 900K. Oh my God, 900. How much is 900K for this? It's probably like 0.5 or something. 935,500. 935,500. Yeah, we have to come at 600,000 in cash, right? If we were to come in cash, और अगर हम कैश कर रहे हैं तो हमें हर प्रॉपर्टी को सेपरेट सेपरेट देखना होगा, और सेपरेट सेपरेट करना होगा, हर प्रॉपर्टी को सेपरेट सेपरेट करना होगा, एंड they, so are they only interested in selling as a portfolio, question mark?
Okay, let's talk about that. Carla, who's Carla? Who's Hamad? I think. She says sounds great. Okay, Carla says sounds great. Fahim, so go ahead with her one property address. Um, Not so. Carla is Hamad's deal. So go ahead, Hamad, and send the one property address. Baki Fahim, the best we can do is try to negotiate. So I'm trying to text her right now, and she's texting back. So let's see what she said, and we go from there. Okay. Let's see if anything else is left from Fahim. Hmm. No, I like this portfolio to be honest. I like the cash return on that, everything. But अगर सेलर बोलता है कि मुझे 900 में चाहिए, $35,000 का डिस्काउंट दे रहा है, पूरी यूएस में कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो उसको 900,000 का कैश दे. इट्स इम्पॉसिबल स्पेशली इन दिस मार्केट में. एक तो कैश वैसे भी कोई नहीं लगा रहा क्योंकि सबको पता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस, ऑयल का इशू चल रहा है, बहुत सारे इशू चल रहे हैं दुनिया में, राइट. लेट अलोन वो बॉडी मुझे 900,000 ला के दो, और उन घरों पे जिसका कैश रिटर्न आपको 20% कैश ऑन कैश आ रहा है, नंबर एक. और दूसरा, उसमें दो कॉन्डोज हैं, राइट. दो अटैच हाउसेस हैं. She's delusional and she's gonna stay on the market for another 100 days. Anyways, we'll if we can break the portfolio and take इसने लिखा है ना जैसे 3 सिंगल फैमिलीज हैं, तो इसका पोर्टफोलियो ब्रेक करके 3 सिंगल फैमिली लेते हैं और उस पर बात करते हैं. बाकी 2 टाउन हाउसेज, 1 हाफ ड्यूप्लेक्स, इसको मिस कर देंगे, ठीक है. देन वी विल जस्ट फोकस ऑन मल्टी फैमिली. Carrie, at this time, yes. However, I can present an offer to her if you don't want all 6. Yes, so let's go with that. Fahim, so basically, what you have to do is to go with the single family homes. Okay, actually, no. I can work on numbers for 3 single family homes. Do you know what's the individual purchase price Mr. Miss Seller is looking to get? Do you know what is the individual? Sounds good. I can work on the numbers for the 3 single family. Do you know what's the individual purchase price she's looking to get? फ़हीम, आपके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ का नंबर है या मैं से पूछूं? अगर है तो मुझे पूछना नहीं चाहिए. पूछ ले, नहीं है. ओके. Do you know what's the individual purchase price she's looking to get on these 3 single family homes? Okay, I texted her. Okay, so Fahim, you're all set for now. I'll move on to the next person. Bro, I apply for visa card. I receive within 14 business days after receiving. I'll join the committee, inshallah. Yeah, no worries, man. Take your time. I just can't guarantee about the prices, bro. Just so you know. And I don't take care of the prices. The accounting team, the financial team take care of it. So if they think that property marketing is costing a lot, they might increase the prices. Hi there, I will submit this proposal. However, I'd like to also add the contingency of park approval. What is park approval? I actually don't know. Is it park approval? Could be a HOA that needs approval? I'm not sure. Tell me more about this, Fahim, in the DMs. I'll come back to you. Okay, let me go back to Heather and then
There's so many things. Nicole is saying, what is the information? Okay, Ahmed, you told me to email him, ask him about the cash offer, rent status, and you gave me his this deal after calling him. My email. Um, Heather, what are you saying on this one, bro? What are these two properties? Am I missing something? Oh, that's a multi-unit. Yeah, it used to be KFC. Yeah, I remember this one. Okay, Flores note, seller wants 50K down. I gave him some simple seller financing offer. Yes, yes, 50K down. Sure, we can run the numbers. Um, okay, let me run the numbers down on this. Okay, so I'm gonna take you guys into a different calculator. Don't be scared. It's just something we use for the second position. So don't be scared. Okay. Let me open this property in that tab as well. So we can go back and forth. He is Ahmed. You told me to follow up on the classes of the rent. आपने अहमद को कॉल की थी. Yes, yes, yeah, I remember this guy. इसका दो बिजनेस थे, इसके तीन बिजनेस थे. इसमें से हमने दो की बात करी थी, बट दोनों वेकेंट थे. वो सब चीज़ें थी. Yeah, I remember this one. But let me run the numbers on this property. 215. What I need to do is to change the streaming and bring you guys to this one. Okay. Okay, so 1.5 is the asking price. आपने जब इसको ऑफर किया होगा हैदर, I probably think that आपने इसको ओवर आस्किंग दी थी या उतनी ही दी थी जितने इसने बोला है. On asking, okay. Okay, so on asking, then it may be they have a loan. So let's go with on asking here. Purchase price हमारी उतनी है. I'll zoom in for you guys to see. Asking price is same. ठीक है. इस प्रॉपर्टी में कितने यूनिट हैं? 3 बिल्डिंग्स हैं, राइट, एंड यूनिट 21 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो ये जाएगी कमर्शियल. तो रेजिडेंशियल से इसको हम कमर्शियल पे ले जाएंगे. और शी नीड्स 50% डाउन. ओके, तो यहाँ पे सेलर कैरी अभी के वक्त से हम उसको डाउन पेमेंट दे सकते हैं 450%. सेलर कैरी कर रहा है 70%, मगर वो बोल रहा है मुझे 50% अभी चाहिए. तो सेलर को कैरी भी 50% करना होगा तब. ठीक है, मगर हमें फिर लोन ज़्यादा लेना पड़ता है. Then we'll go with 55, of course. No, let's go with 65. Yeah, 115% total financing. Okay, I'll explain a little bit just so we can use it next time. The building occupancy is 100%. That's very good to see. 8% cap rate, again, very good. We can work with that. And net operating income is 1 to 1. Okay, for this you need to have a divisible by 12, but we don't have it, so we have to do that here. So unit 10, 100,000, 10,000, $10,083 is the monthly net operating income. 10,083.
10,083. 10,083. Okay, so capex, management, vacancy, everything zero. Property tax, insurance, HOA, utilities, everything zero, right? क्योंकि हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है, इसका मतलब नेट मैंने आपको बताया था, नेट से याद में रखना कि सब चीज़ें छ- क्या बोलते हैं यार उर्दू में, छन के आई हैं, फिल्टर होके आई हैं। ओके, सब चीज़ें फ़िल्टर होके आई हैं, तो इस वजह से सिर्फ जो हमारे पैसे बचेंगे वो सिर्फ नेट ऑपरेटिंग इनकम के बचेंगे, नथिंग मोर। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक्सपेंस निकालने की हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई है, परचेज प्राइस आ गई है। हम अगेन उसको परचेज प्राइस, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, हम कम नहीं करते, बट सेकंड पोजीशन में कम भी कर देते हैं कभी कभी। बट ये सेकंड पोजीशन की तो हम अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कम कर रहे, ताकि उसको अच्छी ऑफ़र दें। बेसिकली अगर हम उसको ये ऑफ़र देते हैं 50% की, ठीक है, $7,550, उसको हम अभी देते हैं पैसे, नंबर वन। नंबर टू, जो बाकी $7,550 हैं उसको हम देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। अगर देखें, ये मैंने इसको बलून को 10 किया है तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, आई थिंक आई कैन डू इवन 9 एज वेल। या आई कैन इवन डू 9, लेट्स डू 8। No, I cannot do 8. Okay, but more importantly, हमारा कैश फ्लो ये रहा। ठीक है गाइज, गाइज अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, वो आपका दिमाग ना उड़ा देगा। सो फोकस ऑन दिस। ओके, आपने प्रॉपर्टी प्राइस, आप ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी को 1.5 मिलियन की। ठीक है, आप ख़रीद रहे हैं, आपने 1.5 मिलियन का सारा लोन लिया है, आपने अपनी जेब से कोई भी पैसे नहीं लगाया। ठीक है, कैसे, वो एक डिफरेंट कन्वर्सेशन है, वो हम बाद में बताएंगे। बट मंथली रेंट आ रहा है, मंथली आपके पास पैसे बच रहे हैं 581। ठीक है, कैश फ्लो एट ए 1.5 मिलियन डॉलर प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब आप सोचोगे यार 1.5 मिलियन डॉलर मैं लगा रहा हूँ इस प्रॉपर्टी पे, मुझे सिर्फ 581 मिल रहे हैं, और उस पर भी ये रेड है फॉर नाउ, बट ओके, बट एनुअली वो ग्रीन आ रहा है, तो उसका मतलब कि इन्वेस्टर्स आर ओके विद इट। ठीक है, और ऐसा अगर रेड और एक ग्रीन है, दैट स्टिल फाइन, इन्वेस्टर्स आर नॉट, डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट लिसन टू दिस, 1.5 मिलियन पैसे लगा के आप 500 महीना ले रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। इसका कैश रिटर्न अगर आप दूसरे वाले कैलकुलेटर से करें ना, जो फर्स्ट पोजीशन सेल्फ फाइनेंसिंग है, उस पर पता नहीं, आई थिंक 1% 2% आएगा। ठीक है, मगर इस पे ग्रीन इस वजह से हो रहा है कि आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया। ठीक है, आपने 50% सेलर से लोन ले लिया, क्योंकि सेलर को आपने पे करना है, और 50% आपने कहीं और से लोन ले लिया, और आपने 50% नहीं लिया। दिस इज द पार्ट गोना ब्लो योर माइंड। ओके, आपने किसी और से लोन लिया है 65% का प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो अगर दोनों को कैलकुलेट करो तो 50 प्लस 65 इज 115% फाइनेंसिंग। ओके, अब प्रॉपर्टी है 1.5 की, आपने दोनों तरफ से लोन लिया हुआ है 115% का। ठीक है, तो इसका मतलब जितने आपको पैसे मिस्टर सेलर को देने या बैंक को देने, वो तो कंप्लीट हो गया एट 1.5 डन। उसके बाद 5% बच रहा है जो कि 1.5 मिलियन का है। अब वो 5% किसके पास जाता है? वो जाता है बायर के पास। राइट हियर आई विल शो यू। तो बायर इस प्रॉपर्टी को खरीदने के $75,000 घर लेके जा रहा है। इमेजिन, इमेजिन दिस, इस प्रॉपर्टी को सिर्फ खरीदने के लिए बायर की जेब में $75,000 बच रहे हैं। प्लस एक और चीज़, मैनेजमेंट, जो हम जैसे डालते ना रिहैब कॉस्ट, उसमें से हमने कमीशन निकालना था, तो इन बड़ी प्रॉपर्टी पे टेक्निकली कमीशन होता है 5%। ये बेसिकली हमने मैक्सिमम रखा हुआ होता है कि ताकि हम इस ज़्यादा नहीं सोचें, बट यूजली अबाउट 3% से स्टार्ट होता है और 5% तक जाता है, और इसमें सारे क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह भी आती है, तो टेक्निकली इस तरह होता है। तो $75,000 आपके बच रहे हैं उसके अलावा भी। ठीक है, अब उन 75,000 से हम लोगों की कमीशन निकलेगा, जो कि एटलीस्ट 10,000 से 15,000 के दरमियान होगा।
प्लस एजेंट कॉस्ट या क्लोजिंग कॉस्ट होगी जो कि प्रॉब्ली 20,000 30,000 की होगी। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनमें से जो रिहैब कॉस्ट होती है वो जाएगी, राइट। तो 75,000 एक तो बायर घर लेके जा रहा है, ठीक है, खरीदने के घर लेके जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उस पे उल्टा आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है और गिफ्ट कार्ड में $75,000 ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। और ये $75,000 कैश है, आपको अपनी जेब में रखना है। इससे आप जो कर सकते हैं कर लो। ऐसा नहीं है किसी प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं या आपको 4 साल में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कैश टू द बायर, टू द बायर एट क्लोजिंग। जब वो क्लोज होगा तो $75,000 टाइटल कंपनी उसको देगी, ये लो तुम्हारा घर जाने के पैसे, ठीक है। प्लस $75,000 और भी हैं जो आपको, हम जैसे 10-15 हज़ार तो उसका हमारा आराम से हमारा कमीशन होगा, तो 10-15 हज़ार वो चला गया, क्लोजिंग कॉस्ट चला गया, रिहैब कॉस्ट चला गया, वो सारे खर्चे जो हैं 75,000 निकलेंगे, राइट। सो इट्स, हम तो अभी $0 की बात कर रहे थे, राइट। हमने $0 पे घर ले लिया, बहुत बड़ी बात है। $0 पे घर ले लिया, बहुत बड़ी बात है। अभी आप बात करें $75,000 आपकी जेब में आ रहे हैं और आपने बाय किया, राइट। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो ये 15% टोटल फाइनेंसिंग है, ठीक है। 100% तो प्रॉपर्टी की होगा, फिर 15% आपके पास फालतू बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसका 5% आपके पास कैश जो बाहर से वो चला गया और उसका 5% आपको असाइनमेंट फी में चला गया और 5% क्लोजिंग कॉस्ट, राइट। और उसके बाद जाकर आपको अगर मंथली पेमेंट आपको मिल रही है 581, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। वो इस वजह से आप इस पे भी हैप्पी होंगे। पहली बात कि आप एक तो घर लेके जा रहे हैं $75,000। अगर कोई बंदा $75,000 लेके जा रहा है, यूएस में भी $60,000 ईयरली लोग कमाते हैं और ये अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। अपर मिडिल क्लास जो होते हैं वो कमाते हैं $60,000, दैट्स अबाउट $3-4,000 अ मंथ, अपर मिडिल क्लास। तो आपने 1 साल से ज़्यादा की इनकम कमा ली है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में यूएस के लिए। और इमेजिन कि अगर ये बैक होम या आप लोगों में से किसी ने डील की होती और जैसे हम खुद इन्वेस्ट करके खुद ही ले रहे होते, देन इमेजिन हाउ मच मनी दिस इज गोना बी, राइट। सो इमेजिन दिस। एनीवेज, तो $75,000। अब आप ये सोचो कि कैश इस वजह से ये ओके होता है इन्वेस्टर्स के लिए। पहली बात तो ये, एक तो ये घर लेके जा रहे हैं $75,000, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि यहाँ पे इन्होंने तो एक रुपया भी नहीं डाला डाला, राइट। एक रुपया भी अपनी जेब से नहीं निकाला। 50% का उनको एक तरह से लोन मिल गया, 65% का उन्हें कहीं और से लोन मिल गया। तो उसका मतलब उल्टा उनके पास पैसे बच रहे हैं, राइट। तो अगर आपने एक भी रुपया नहीं डाला किसी भी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी आपको 581 मंथली दे रही है, तो इट्स नॉट अ बैड डील। अगर वो $1 भी देती ना मुझे, मैं तब भी हैप्पी होता, क्योंकि मैंने जो हम कुछ भी नहीं लगाया, सब लोन लोन मिला के मैंने पूरी डील स्ट्रक्चर कर दी। मैंने अपने पैसे एक रुपया भी नहीं लगाया। सो इट डजेंट मैटर फॉर मी। अब आप मुझे 500 दो, 600 दो, 700 दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि इस कैश फ्लो रिटर्न को गाइस बोलते हैं इन्फिनिट रिटर्न। इन्फिनिट का मतलब होता है कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इन्फिनिट। क्योंकि आपने जब $0 लगाए हैं, आपने अपना एक रुपया भी नहीं लगाया, तो कैश फ्लो आपको जो भी मिल रहा है यू आर हैप्पी विद इट। सो उसको बोलते हैं इन्फिनिट, कि आपने बगैर पैसे लगाए $0 लगाए अपनी जेब से, आपने $580 बना रहे हैं मंथली, ठीक है। और फिर आपको पता है बाकी जो बायर कैश लेके जा रहा है घर पे, एक वो अलग बात है, राइट। सो इट शुड ब्लो योर माइंड कि इस तरह की स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं और हम इनसे पैसे बना सकते हैं कि हमें ख़रीदने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, ख़रीदने के। अगर देखो मैं 110% करता हूँ, 115 नहीं करता, ठीक है। 110% फाइनेंसिंग मैं इस लोन को कम कर देता हूँ, 60% कर दिया, तो ये आ गया 110% फाइनेंसिंग, 110, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि असाइनमेंट फ़ी मसला नहीं। यहाँ पे कैश टू बायर ज़ीरो हो गया, ठीक है। कैश को बायर को हम कैश नहीं दे रहे, बोल रहे कि भैया बायर तुमको अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने, मगर तुम्हें एक्स्ट्रा कैश भी नहीं दे रहे, ठीक है। मगर कैश नहीं दे रहे इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी, असाइनमेंट कॉस्ट आपको नहीं मिलेगी, नहीं। आपको असाइनमेंट कॉस्ट और जो ब्रिज लोन देना होता है वो तो हमें देना होगा। तो ये दो 75% तो नहीं जाएंगे।
कैश बायर को कम मिलेगा, ठीक है, मगर उस पे इसका जो रिटर्न है ना वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये हम बायर पे छोड़ते हैं, अगर ये डील कंप्लीट होती है, इसको एंड तक जाएंगे, तो इस डील को हम बायर पे छोड़ेंगे। बायर को बोलते हैं कि भाई अगर आपको इसको 65% का लोन लेना है तो आप 65% ले लो, 75,000 आपको अभी आपके जेब में आ जाएंगे और आपको 581 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे कैश फ्लो ज़्यादा दो, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मुझे मंथली कैश फ्लो चाहिए, तो ठीक है, फिर हम इसको 60% लोन करके डील डन करेंगे और उसको जो उसका मंथली मिलेगा वो $1,263 मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं वो हमेशा पेमेंट्स प्लान पे करते हैं, जेब से पैसे निकालते हैं, तो हो सकता है उसने कोई एक नई गाड़ी बाय करी होगी, आई डोंट नो, पोर्श और व्हाटएवर, तो उसकी पेमेंट मंथली 1,263 हो, तो वो बोलता है कि भाई मैं एक, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर आपको भी सोचते हैं जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं ना, आप अपने पैसों से कभी कोई चीज़ बाय नहीं करते, आपको कितना अच्छे से अच्छा आईफोन मिल रहा है, आप अपने पैसों से बाय नहीं करेंगे, आप बाहर जाएंगे, एक एसेट खरीदेंगे या एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिस प्रॉपर्टी का कैश फ्लो इतना होगा कि वो मंथली पेमेंट आपकी एप्पल के फ़ोन की निकाल लेगा, तो फिर जाके आप वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, उससे पैसे आने शुरू करेंगे, वो पैसे उठाएंगे और एप्पल का फ़ोन बाय करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का इन्वेस्टर सोचते हैं, कभी वो अपनी जेब से पैसे नहीं निकालेंगे। एनीवेज, तो वो ये सोच रहा होगा कि मेरी कोई गाड़ी की पेमेंट है, मेरे घर की पेमेंट है, मेरे किसी काम की पेमेंट है, तो मैं ये प्रॉपर्टी लेता हूँ, मुझे 75 की भी ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे मंथली ये पेमेंट चाहिए 5 साल के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इसने इतनी सारे लोन को जमा किया, काम किया और इस तरह उसने प्रॉपर्टी कर दी, तो वो 75,000 अभी नहीं ले रहा, मगर वो मंथली पेमेंट पे जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर लाइक आगे जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपका माइंड को ओपन करेंगे एंड यू गोना बी लाइक व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन, आप गोना यू गोना बी अमेज्ड बाय हाउ मच अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव, ठीक है। बट एनीवेज लेट्स गो बैक टू द एक्चुअल नंबर्स, ओके। तो अभी हम जाते हैं, यूजुअली जाते हैं 65 पे, क्योंकि बायर थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको अगर $75,000 जेब में आ रहे हैं ख़रीदने पैसे, और उनके पास कैश फ्लो भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ गुड, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो को अगर ग्रीन में लाना है तो हम ये कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि एमोटाइजेशन को बढ़ा दें, इसको 50 कर दें और देखें वो आता नहीं आ रहा, हम इसको 60 कर दें और देखें वो आ रहा है नहीं आ रहा, हम इसको 70 कर दें, जिससे हम नॉर्मल सेलर फाइनेंस की ऑफ़र में करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, तब भी नहीं आ रहा 100 पे, let's say 200, there now it's in green, okay। मगर इसका मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो पेमेंट होगी ना मिस्टर सेलर को, वो 300 तक पहुंच गई, इट्स वेरी 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 लो। वो बोलेगा मैं आपको लोन दे रहा हूँ 750 का, राइट, क्योंकि डाउन पेमेंट तो आप 750 दे रहे हैं, तो मिस्टर सेलर डाउन पेमेंट लेके 1.5 का हाफ तो उसको अभी मिल गया हाथ में, ठीक है, मगर उसको लोन भी तो वो अभी हमें लोन दे रहा है 750 का, जो हमें 8-9 साल में पे करना है, तो $700 का 700,000 का लोन है और इसको हम $313 पे कर रहे हैं, तो बहुत मसला हो जाएगा, एक ये बात। दूसरी बात ये कि आपका बलून 8 साल में भी आप 19% पे हो गए, राइट। सो लेट्स ट्राई, लेट्स से 12 ईयर्स, या आपको चाहिए होगा बलून कुछ 11 ईयर्स का, say 10, या सो द 10 वुड बी द मिनिमम, राइट, लाइक 25% से ज़्यादा आ गया, ये ग्रीन पे आ गई, तो ये डील यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकती है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, हमने अब मिस्टर सेलर को जाके ये बोलना है कि मिस्टर सेलर आपका हम 50% डाउन पेमेंट ला के देते हैं, ठीक है, और 50% हम आपको सेलर फाइनेंस करते हैं ओवर द टाइम ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का हम सेलर फाइनेंस करेंगे, बाकी पेमेंट हम आपको पेमेंट देंगे 313 की, ठीक है। अगर वो मना करता है तो then we're gonna move up a little bit, um, and then we're probably gonna bring the amortization down. I feel like there's still a lot, he might not even respond. It's fine, I think we can just go with 100,000. So for example, अगर मुझे यहाँ इस कैलकुलेटर में ये भी है कि अगर मुझे $1,000 देना है तो मैं $1,000 इस कैलकुलेटर में डालूंगा छोटे से, तो ये मुझे बता देता है 62.5, सो ईयर्स लिखो,
तो 62.5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, and then this is $1,000 a month. Okay, so I think we can go with Mr. Seller and tell him, Mr. Seller, we will give you 50% down, monthly payment of 1,000, 50% down, monthly payment of 1,000 at your asking price. Okay, उसको ये नहीं बताना कि भाई बायर को इतना पैसे मिल रहे हैं, ये है वो उसका काम नहीं है। हम जिस तरह डील स्केड्यूल कर रहे हैं वो उसका काम नहीं है, वो हमारा काम है। आपको सिर्फ उतना बताना है कि हम 50% अभी देंगे, बाकी 50% जो है ना सिंपल आपको $1,000 की पेमेंट्स करेंगे 10 साल की टर्म पे। दैट्स इट। आई थिंक 10 साल से भी हम कम कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद 10 ईयर्स ताकि हमारे पास नेगोशिएशन का रूम यहाँ से ज़्यादा हो। ओके, so I think call him and number also shared. Yeah, I'll share the numbers with him. Um, but it's going to be the LOI that we need to send, and then I will have to call the numbers. I guess let me text you the numbers. So purchase price 1500, down payment 750000, monthly payment 000. What else? What happened to here? Term 10 years. 10. What is 10 years in months? 10 years in months. 120 months. Term 120 months. Balloon term 120 months. What else? Yeah. So Heather, I'm gonna send you the message here. इसको आपने LOI sign नहीं करनी, okay? इसको I will send the LOI. I have to get it approved from bank and then send it. उसने अगर बोल दिया 50%, so now we can run the numbers on 50%, okay? So मैं आपको सिर्फ अभी इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि आप सिर्फ देख लो, अंदाज़ा हो जाए, बट आपने सेंड नहीं करनी, उसको समझ नहीं आएगी और आप समझा नहीं पाओगे। अगर वो कॉल का बोलेगा तो वो मसला हो जाएगा। तो मैं इसको बताऊंगा इस तरह के, हैदर ना कि वी हैव बीन रनिंग नंबर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और बैंक से अप्रूव करा के ये जो दो लोन होते हैं ये अप्रूव भी कराने होते हैं, राइट? तो इसको अप्रूव करा के आई थिंक यूजली प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप 70% लोन टू वैल्यू जा रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा मसला होता है। अगर 70 से जितना ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं 60 पे जाऊँ तो हम 60% लोन टू वैल्यू किसी भी बिल्डिंग पे मिल जाता है ईजिली, नॉट टू ईजी बट ईजिली। मगर अगर 50% होता तो और आसानी से मिल जाता। मगर मिस्टर सेलर को चाहिए 50%, तो हम यहाँ से कम नहीं कर सकते, ओके? बट एनीवेज इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, डोंट वरी अबाउट दैट। No, I will not call him right now. I'll call him after I send him the LOI, ताकि वो पढ़ ले, उसको समझ आ जाए, क्योंकि LOI जो है वो तकरीबन 10 पेज की है वो, ठीक है? तो उसको भेज के आई विल कॉल हिम टुमारो। आई विल सेंड द LOI टुडे। लेट मी पुट ऑन इन माय नोट्स। मुझे इसको LOI तो आज सेंड करनी पड़ेगी। LOI send for Heather. What's this is the company, right? Like 1.51. Let me take that. Okay. Do you have the email? I might not. So give me the email, or I can just Google it. But yeah, give me the email just in case. Save me time. Okay, I got the email. That's the one.
I'm gonna take a screenshot for my own sake as well, just so I don't forget, and I'll send it to. एक और चीज़ भी होती है इन इन घर में कि हम स्टेबलाइजेशन पीरियड गाइस हम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम स्टेबलाइजेशन, जब हम मल्टी, आई थिंक ये मैंने आपको शायद बात नहीं बताई होगी। वन सेकेंड, इक्विटी, आई डोंट थिंक मैंने ये बात आपको पहले बताई होगी, बट टेक्निकली एक एक चीज़ को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन पीरियड, ठीक है। स्टेबलाइजेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप प्रॉपर्टी को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी को मेक श्योर करते हैं कि वो उसकी रेंट इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि भाई इसके रेंट तो 800 है, मगर मार्केट रेंट जो है ना 1000 है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो, लेने के बाद इंक्रीज़ करना। मगर इतना आसान नहीं होता, राइट। अगर आप रेंटर को निकालो, फिर आपको पैसे डालने पड़ते हैं, पैसों से प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जब इंक्रीज़ हो जाती है तब जाके आपको रेंटर ढूंढना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों करने में टाइम लगता है। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, फिर आपको रेंटर निकालना और फिर रेंटर को वापस डालना, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम बोलते हैं भाई अगर आपको आपको पता है कि रेंट इंक्रीज़ हो सकता है, तो ठीक है, हम आपसे डील करते हैं, इतने की डील करते हैं जितने की यहाँ पर है, ठीक है। 1.5 50% देते हैं, मगर आप हमें दें स्टेबलाइजेशन पीरियड। इसका मतलब है कि स्टेबलाइजेशन पीरियड कितने महीने का भी आप मांग सकते हैं। बोलते हैं 1 साल का मांग लो, 10 महीने का मांग लो, 1 महीने का मांग लो, इट्स अप टू यू। तो यूजुअली हम जाते हैं कम से कम 6 महीने का, ताकि हमें 6 महीने का पीरियड हो। तो इसमें लिखा हुआ है मंथ टू स्टेबलाइज। इस प्रॉपर्टी को स्टेबलाइज करने में, रेंट बढ़ाने में, रेंटर लाने में, रेंटर को निकलवाने में, तो हमें 6 महीने लग जाएंगे। तो उन 6 महीने के जो पैसे हैं वह हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, हम आपको पैसे देना स्टार्ट करेंगे 7 महीने से, ठीक है। उससे होगा ये कि अभी जैसे हमने बात की थी कि बायर को इस डील में $75,000 घर लेके जा रहा था, राइट। तो अब वो पैसे बढ़ गए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 से 86,000 हो गए। वो ऐसे हो गए कि ये जो पैसे हैं ना मिस्टर सेलर को देने वाले $1,000, वो हम नहीं दे रहे 6 महीने के। तो वहाँ पे 6,000 वो बढ़ गए, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो उसमें ऐड होगी, तो 75 प्लस आई थिंक $10,000, तो वो ऐड यहाँ पे हो गया। एंड देन यू आर मेकिंग लिटिल बिट मोर मनी, ठीक है। तो उससे ये होता है कि भाई हम सेलर को बोलते हैं ठीक है, हम आपका घर लेते हैं, आप जो काम बोल रहे हो हम वो सब करेंगे, मगर हमें 6 महीने का थोड़ी सी गुंजाइश दो, ताकि हम उन 6 महीने में अपने पैसे लगा के प्रॉपर्टी को बेहतर करें, एक, फिर रेंटर को फाइंड करके रेंटर को डालें, ठीक है। रेंटर को ढूंढने में आपको 1 से 2 महीने लग जाएगा, और प्रॉपर्टी को फिक्स करने में आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे एटलीस्ट। तो 1 महीना आपने एक्स्ट्रा ले लिया कि जस्ट इन केस के थिंग्स प्लान की तरफ नहीं जाती। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, तो आप ये नंबर देखना, ठीक है। 86,000 इज़ गोना गो बैक टू 75, ठीक है। तो अगर मैं 6 महीने का उससे लेवरेज ले लेता हूँ, मुझे 6 महीने का टाइम दो पेमेंट्स में, तो सारी पेमेंट बेसिकली उन 6 महीने आपको कुछ भी पे नहीं करना। आपको अभी बैंक का लोन तो पे करना है, ऑफ कोर्स, जो बैंक का है मिस्टर सेलर को वो नहीं पे करना, ठीक है। तो देन यू कैन यूज स्टेबलाइजेशन पीरियड। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पूरी वेकेंट है, मगर उसका इतना रेंट जाएगा, तो और वो चाहता भी ज़्यादा डाउन पेमेंट है, अगर वो ये सब चाहता है, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट देते हैं। हम ये भी कबूल करते हैं कि आपके पास ज़ीरो इनकम है, मगर मुझे कम से कम 6 महीने का आप मार्जिन दें। 6 महीने के बाद मैं आपको पे करना शुरू करूँगा, ताकि मैं स्टेबलाइज कर दूँ प्रॉपर्टी, सारे रेंटर्स में डाल दूँ, ठीक है। होपफुली दैट मेक्स सेंस। एड मी इन सी सी ऑल्सो। सीसी नहीं कर सकते, वो सिक्योर होता है ईमेल, बट आई कैन सेंड अ सेपरेट ईमेल एंड देन सीसी यू। Okay, I can do a separate email and then CC you, but with bank statement and things like that, it's the secure thing line, secure email line. It's not, we cannot share it basically. Okay, anyways, let's go back to this property. I explained a lot of things. So अगर ये property हम contract में ला देते हैं, तो आप you can imagine how much money Mr. Seller is gonna make on this, Mr. Buyer is gonna make, ठीक है।
सेलर का भी खुशी इस वजह से है कि उसको 50% हम अभी दे रहे हैं, जो कि मार्केट में कोई भी ले नहीं रहा उसको। 50% हम अभी दे रहे हैं, और दूसरा ये कि 50% हम 10 साल में दे रहे हैं। बट बायर को इतना फ़ायदा है कि उसको 75,000 वो घर लेके जा रहा है बगैर कुछ करे, 1 रुपया से लगाया भी नहीं, प्लस 75,000 लेके जा रहा है, प्लस उसको मंथली $500 जेब में आ रहा है 75,000 के बाद भी, राइट। सो इस पे इन्वेस्टर ऐसे दौड़ के आते हैं। आई मीन अगर मेरे साथ भी होती डील तो आई विल बी रनिंग। व्हेन कैन वी लर्न द सेकंड कैलकुलेटर? इन सम टाइम। सेकंड कैलकुलेटर के लिए आपको काफ़ी समझना पड़ेगा लोन्स वगैरह। सो इन सम टाइम्स, बट मैं छोटे छोटे जिस तरह आपको ग्लिम्स बता रहा हूँ, मैं इस तरह आपको बताते जाऊँगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा फॉर फ्यूचर। ओके, होपफुली दैट मेक्स सेंस। Okay, can we call Gracia? Yes, let's call Gracia. I think who was the next person? Heather, and then Heather, then लेकिन क्यों सैयद भाई इस तरह? तो सेलर को 42 में 5K निकालना होगा, इज़ अ बेटर ऑफर उसके लिए नहीं होगी कि 1.5 निकालें। आई डोंट नो इफ अहमद, आर यू, कैन यू ओपन योर माइक? आई थिंक आई मिस्ड योर कमेंट। लेकिन क्यों सैयद भाई इस तरह? तो सेलर को 42 में 5K निकालना होगा, इज़ इट बेटर ऑफर उन उसके लिए ये नहीं होगी कि 2.5 निकालें? ओह, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हो, एजेंट कमीशन की। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सेलर के लिए तो, एजेंट के लिए तो दोनों तरफ से बेहतर है ना, क्योंकि उसको वहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं और हमारी तरफ से भी पैसे पैसे मिल रहे हैं। सेलर के कम हो तो रहा है। सेलर सेलर को तो कम नहीं होंगे पैसे, अगर हम उसको हाँ 42 दे दें तो उसे एग्जैक्टली। 5000 पे करना पड़ेगा, उसके पास तो 37 आएगा ना। फिर अगर हाँ उसको एक साइड का देना पड़ेगा तो उसके पास 39 आएगा, हाँ, 39.5। वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम 42 दे रहे हैं तो सेलर को तो 37 मिलेगा, ठीक है। मगर सेलर को ये भी पता है कि वो, उसने जो 45 का एग्री किया है ना, उस 45 में उसको उतने पैसे दोनों तरफ के एजेंट के निकालने लाजमी है, ठीक है। तो टेक्निकली नुकसान यहाँ पे सेलर का है, ठीक है, मगर एजेंट का फ़ायदा है। और सेलर का नुकसान इस वजह से नहीं है कि हमने ये बात करी है। सेलर का नुकसान ऑलरेडी हो रहा था, क्योंकि कोई भी दुनिया, यूएस में किसी भी, कोई भी सेलर करता है, बेचता है, तो उसको हमेशा दोनों साइड की एजेंट की कॉस्ट पे करनी है। अगर हम नहीं लेके आ रहे एजेंट, तो उसको एक साइड की करनी है, ठीक है। तो हमारा ना लाना सेलर का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और हमारा लाना सेलर का नुकसान नहीं हो रहा। सेलर को वापस से स्क्वायर वन पे आ जाता है, सेलर ज़ीरो पे आ जाता है, क्योंकि उसको तो करना ही यही था। अगर हम नहीं लाते तो सेलर का फ़ायदा है, अगर हम लाते हैं तो सेलर इज़, कोई भी लॉस नहीं है सेलर का, ठीक है। तो सेलर के हिसाब से तो इट डजेंट मैटर कि हम लाएं ना लाएं, उसको पे करना था। सॉरी, अगर नहीं लाते तो सेलर का फ़ायदा हो गया। अब जो सेलर का फ़ायदा हो गया ना, हमने वो निकाल के एजेंट को दे दिया, ठीक है। हमने बोला भाई एजेंट, तुम हमको यही एजेंट को बोला तुम हमको रिप्रेजेंट कर लो। तो अब ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एजेंट आ गया, ठीक है। तो अब सेलर वापस वहीं पे चला गया जहाँ पे पहले था। सेलर का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम एजेंट लेके आ गए अब, ठीक है। मगर एजेंट का फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसको दो तरफ से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेलर को पता चलेगा भाई मुझे इतने पैसे पहले भी देने थे, मैं भी देता हूँ। मगर एजेंट को फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमारी एजेंट से बात हुई ना, तो एजेंट अब हमारे साइड, हमारी हमारी तरफ का हो गया, क्योंकि उसको यहाँ से हमारी ऑफ़र से दो तरफ के पैसे मिल रहे हैं, एक तरफ के नहीं मिल रहे, ठीक है। तो सेलर को तो पता ही है कि मुझे दोनों तरफ के एजेंट को पे करना है। अगर हम नहीं लाते तो सेलर का बेनिफिट है, अगर हम लाते हैं तो सेलर ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मगर हमने बोला कि हम नहीं लाते, मगर हम ले आते हैं, अगर आप हमारा एजेंट बन जाओ। तो वही लिस्टिंग एजेंट अगर हमारा भी एजेंट बन जाता है, तो अब एजेंट को टेक्निकली दो काम करना है, एक हमें भी रिप्रेजेंट करना है, एक उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो एजेंट को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब एजेंट ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो एजेंट ज़्यादा हमारी ऑफ़र पुश करेगा, ठीक है। टेक्निकली
बाकी ऑफर में भी एजेंट को बायर का और सेलर का कमीशन पे करना है, तो टेक्निकली सारी ऑफर सेलर के हिसाब से सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मगर हमारी ऑफर एजेंट के हिसाब से चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे एजेंट हमें भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, होपफुली दैट मेक्स सेंस। गुड क्वेश्चन दो। कैन वी कॉल Garcia? या लेट मी सॉरी प्रॉपर्टी हमने क्या शो दी थी। आई विल गेट बैक टू यू फहीम ऑन दिस। I'm just gonna check my emails if I get anything, any text messages from anyone. No. Okay. So let's call Gracia. उसका क्या मसला था, फ़ोन नहीं उठा रही थी शायद, I think. If I call her yesterday, I don't think it'd be better to call today. Gracia. What's her name? But I'll text her. I'll send another property. Yes, I'll check. Um, Sarah Finance deal. Yesterday I called him, Ahmed. I've been calling him like 9 times. Oh, I'm worried if I call her again, it might be bad. आपने उसको ईमेल पे बात चल रही है आपकी अहमद ग्रेसिया से, वो ईमेल रिप्लाई कर रही है या फिर वो भी नहीं कर रही? आप ईमेल फॉलो अप कर रहे हो उसको? बिल्जो से हाय हाय बिल्जो। फ्राइडे से रिप्लाई नहीं आया। फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। इट्स फाइन, होप यू डूइंग वेल। I don't want to bother you, just wanted to follow up on the deal me and Ahmed has been working on. We're interested in this property, looking to close as soon as possible. हेलो। Hi Ahmed. सीरियसली मुझे लगता है बैड तो वो है जो वो कर रही है, मतलब 31 डेज हो गए मुझे उससे बात करते हुए, और वो इतना लेट कर रही है हर चीज पे। वो 3 दिन तो ऐसे ही लगा देती है। इसका सेलर का कोई मसला था क्या? सेलर कहीं गया हुआ था, कुछ ऐसा था मसला, क्या था? नहीं नहीं कोई इसका मसला नहीं था। किस प्रॉपर्टी का था मुझे पता नहीं, वो किसी ने बोला था कि सेलर आई डोंट नो कि वो हॉस्पिटल है, क्या था पता नहीं। नहीं, आई गेस आप एक और ग्रीसिया से बात कर रहे थे तो शायद वो वाली थी। हाँ, पर वो काफ़ी पहले की बात है, तकरीबन कोई 2-3 वीक पहले की बात है। ये भी थी तब से, ये तो उससे पहले की। तो ग्रेसी का क्या मसला, ये अभी मतलब फ्राइडे से अब तक उसने कोई फ्राइडे से पहले रिस्पॉन्ड कर रही थी, क्या बता रही थी आपको? नहीं, फ्राइडे से पहले भी ये अल्लाह का करम ही होता है, इसका एक मैसेज आ जाता है। तो आप उसको डेली एक मैसेज कर रहे हैं या फिर किस तरह करते, किस दफ़ा करते हैं मैसेज? इसको 2-3 दिन बाद करते हैं एक मैसेज। गुड गुड गुड। ओके, लेट मी कॉल आज हर। वैसे इसको मैसेज किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसने देखा नहीं। चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, मैं उसको बोल दूँगा कि आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बॉदर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, ताकि क्योंकि अगर इसने ब्लॉक फ्लॉक करती है और बिल्कुल ही आगे चलेगी, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो दैट्स द ओनली रीज़न, बिकॉज़ वी गॉट वेरी क्लोज, वी आर ऑलमोस्ट डन विद हर। सो लेट्स सी, अगर वो फ़ोन नहीं उठाती।
उठा के देगी यार। Hey, this is Grace at Coronado. Your call is very important to me. Please leave me a brief message and I will call you back, or you can also text me for a fast response. Thank you. Have a great day. Hola, has llamado a Grace Coronado. Gracias por llamarme. Tu llamada es muy importante para mí. Por favor, déjame un breve mensaje y te regresaré la llamada. O si gustas, mandarme un mensaje de texto y te contestaré más rápido. Hey Garcia, this is Sayed again, just following up on the purchase that we wanted to do with one of your listing. I'm not sure if you're busy, or I don't know if you're not interested in us at all. I just don't want to keep calling you and bother you and hopefully get on the bad side of you. But we are really excited to purchase this property. We even have renter in place that will take over from us, and then start renting. So everything is good to go in terms of financing, and everything is ready. We just want to kind of pull the trigger, and I really need your help with it. We also don't have an agent, so if you happen to kind of present us as well, we'd be happy to do so. And if the dual agency is allowed for your brokerage, and we can go from there. Let me know if you can reach out back to me at this number. That'd be great. I'll shoot you a quick text. But again, I don't want to bother you, but I'm really, really excited for this opportunity to kind of add to my portfolio. I'll chat soon. Take care for now. I don't know, man. I don't know why she's not answering. But don't lose the hope, Ahmed. There's always hope. इसको लूज़ नहीं करना. अगर वो हमारे साथ ऐसी है तो आई थिंक वो सबके साथ ऐसी होगी. इसका मतलब है कि कोई भी इससे गेट थ्रू नहीं कर पा रहा. अच्छा, इसकी वॉइस पे ये बोलती है क्लीन ऑरो. व्हाट इज़ क्लीन ऑरो? ये मेरे ख्याल में सिर्फ एजेंट नहीं है, कुछ और भी कर रही है ये. लेट मी चेक व्हाट्स दिस कंपनी. तो ये बोल रही है कि क्लीन ऑरो की कंपनी में काम कर रही है, और या ओनर होगी कोई कार डिटेलिंग कंपनी की. और प्लस इसने शायद साइड में एक दो ऐसा रियल एस्टेट का लाइसेंस टेक्निकली कोई भी बंदा ले सकता है, एंड इट डजंट कॉस्ट अ लॉट इन यूएसए. इन कनाडा इट कॉस्ट लाइक आई डोंट नो $10,000, but in USA it costs like I don't know 1 or 2,000 USD total. तो वो इसने शायद लाइसेंस ले लिया होगा एज ऑनलाइन पढ़ते हुए, और उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई होगी. आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग. तो इसको मैंने मैसेज तो कर दिया है. मैसेज इस तरह का कर रहा है कि इसको रिप्लाई आ जाना चाहिए, एंड लेट्स सी. Okay, Ahmed, what's the status? How's everything going with you? I want to know. I haven't in last few classes you didn't give me any deal to kind of call or chat. Is everything okay with you? कोई चीज़ missing है? नहीं सही भाई, मेरे ना पेपर हो रहे हैं बोर्ड के होने वाले हैं तो. अच्छा. Oh, I see. Okay. आप कौन से उसमें हो आप? First 11th standard? 12th. 12th standards. Okay. इसके बाद university, right? I feel like if you give this a 1 year, you will not go to university. I can guarantee you that. There's a couple students actually. एक स्टूडेंट जो हमारी जून की क्लास में था, इसके साथ यही हुआ था. उसने हाई स्कूल कंप्लीट किया था, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था. उसने फिर ड्रॉप आउट कर लिया था क्योंकि उसको पता था कि यूनिवर्सिटी में कुछ पैसे तो छोड़ो, आपको जॉब भी कंफर्म नहीं होती यूनिवर्सिटी में, राइट. और 4 साल को आपको, खैर यहाँ पे तो पे करना पड़ता है, शायद पाकिस्तान में नहीं करना पड़ता. तो 4 साल में आपको इतनी डेट हो जाती है. That is all not covered. But I'm not gonna recommend that. I'm just saying. Okay. Yeah, Ahmed. Anything else? Let me know. Mario, just keep following up on him 1 week at a time, and then we can go from there. मैंने उसको कहा था मैं आपसे फॉलो अप करूंगा कुछ देर बाद, लेकिन उसने कहा वो हंसने लग गया और आशीष ने ब्लॉक कर दिया. उसने ब्लॉक क्यों कर दिया? या फिर आप उसको ईमेल पे फॉलो अप करो. नहीं सही पे वो नहीं, अभी बेचना ही चाहता, उसको कोई जल्दी नहीं है, मतलब हाँ, मसला ये है.
बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है, वो बेचना नहीं चाह रहा, वो बोल रहा है कि मेरे पास रेंट आ रहा है, इवन दो वो थोड़े पैसे लूज़ कर रहा है, या लूज़ नहीं कर रहा तो वो खुद मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को। अगर खुद मैनेज कर रहा है तो वो जो 10% हम लगाते हैं ना, वो नहीं लगा रहा। तो बोलता है ठीक है, मैं इसको 2 साल भी बैठे रहूँ, मैं बैठे रहूँ। तो उससे बस मार्केट पे लगा के छोड़ा हुआ है, और अम, उसको बेचने का मूड नहीं है। तो यूर राइट कि वो बेचना नहीं चाह रहा, मगर ये है कि अब जब इसका मॉर्गेज ख़त्म होगा तो आई थिंक फिर वो बेचना चाहेगा, कुछ ना कुछ करना चाहेगा। बट अगर वो नहीं भी करना चाह रहा ना, तो 1-2 महीने में चीज़ें बदलती रहती हैं, राइट। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, उसको देखेगा यार मैं पैसे इसको दे देता हूँ, यहाँ से ऑफ़र आ गई थी। अब बोला था 6 महीने में उसको एक ऑफ़र आई है, उसको ऑफ़र आई जो उसने उसके क्लोज गया था, और उसमें भी वो डाउन पेमेंट इतनी दे रहे थे कि हम नहीं देंगे इतनी, और वो लोग भी नहीं देते, वो सिर्फ बोलने की ऑफ़र थी। या तो वो गलत बोल रहा होगा, या तो उसने एक ज़ीरो ऐड करके डाउन पेमेंट बताई होगी हमें। तो उसको आप फॉलो अप पे रखें बेसिकली। अगेन उस पे ये नहीं डरें कि वो बेच नहीं रहा तो मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, महीने में बेसिकली एक दिन बैठें, 2 ईमेलें लिखें और उसको महीने में स्केड्यूल कर दें, एंड देन यू आर डन। ताकि एक महीने में आपके 2 महीने ऐसे निकलेगा, 2 महीने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्ड आता है तो आप उसको देखें। वेरी सिंपल। बट फॉलो अप नहीं भूलें, क्योंकि आप उसके साथ एक तरह से कनेक्शन बनाते रहेंगे। भले उन्हें ब्लॉक कर दिया, इट्स फाइन, मगर आपने भूलना नहीं है उसको। Okay. Heather, send me one more deal. One more deal. Esteban Flores. It's interesting name. Okay, okay. That's good. Harry said was in the flight. May I know about yesterday Hussein deals? What should be offered? बेसिकली हुसैन की डील से हुआ ये था कि मैंने उसको कॉल करी थी आज, उसको बोला था कि मैं 45,000 नहीं दे रहा, मैं आपको 42,000 दूंगा, मगर मैं आपको आपकी क्लोजिंग कॉस्ट पे कर दूंगा। ठीक है, सेलर की क्लोजिंग कॉस्ट एजेंट कमीशन के अलावा। ठीक है, तो टेक्निकली बात वही हो गई है। उसको लग रहा था कि वो सेलर को पे करनी पड़ेगी क्लोजिंग कॉस्ट, तो मैंने बोला कि नहीं मैं करता हूँ, आप प्राइस को नीचे लेके आए। तो उसने बोला ठीक है, मैं एजेंट से बात करती हूँ, एक बात। और दूसरी बात हमने बोला था कि अगर आप चाह रहे हो हमको रिप्रेजेंट करना सेलर के साथ, ताकि आपको दो कमीशन मिल जाए, तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये दो बातें सेलर से पूछेगी, पूछिए मुझे पर वापस आएगी। देन आई थिंक वी आर वेरी गुड चांस कि हम आज या कल में इसको कॉन्ट्रैक्ट भेज दें। Okay, let's talk about this. Oh my God, what is this? Is it a building? Um, it's a portfolio. Wow. Okay, 24,000 square footage. Unit 24. Impossible. Such three big buildings, and how is unit 24? Oh, these are the building. These two are the building. Okay, I thought these are the buildings. Okay, these two are the buildings. That's not bad then. 24. NOI decent enough. Cap rate is okay. Parking space 5.2. Okay. Okay. Esteban, blah blah blah. Adam, he wants to discuss no offer sent. So एडम से सिर्फ बात करनी है, कोई ऑफर सेंड नहीं हुई है उससे। तो एडम ईमेल पे क्या बोलता है? आपने पूछा उससे क्या बोलना है? बोला एडम ने इसका फिर पूरा VOM पढ़ना पड़ेगा। तो आस्किंग प्राइस इज 5650।
अब देखिए इसने जो कंपेरेबल्स लगाए हैं ना प्रॉपर्टी के, वो काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इट डजेंट मैच एट ऑल विद हिम। तो ये मसला होता है बड़ी प्रॉपर्टीज़ में। ओके, रेंट, total square footage 1400 one bedroom, 17 two bedroom, two bedroom, 2 3 average. Okay, one bedroom mix, 2 bedroom. 10-year cash flow. um, Total loan amount is 3.36. Yeah, interest rate 6.5. 30 years. uh, Years of interest only is 24 months. Loan amount. Total debt service takeover is 1.1. Debt service coverage is 1.3. Rent comparables. Yeah, okay, thanks for reaching out. Yes, the property is still available. I'll be available tomorrow to discuss. Let me know if you have availability then or some point later this week. Thanks for looking forward to speaking to you soon. Okay, let's see. This is Adam. Hey Adam, this is Sayed. I believe you've been speaking to Heather Naki on the email. We were kind of running numbers on the property at First Street. I'm sorry. I, uh, I wasn't connected to you earlier. I'm sorry about that. No, that's right. But I can hear you now. Yeah, I'm sorry. This is Adam Podbelski. I missed you. I missed what you were saying earlier. Yeah, I was just saying that you've been speaking to Heather Naki on the property on the First Street. It's a 24-unit building. Yep. Yeah, in Fort Myers. Yes, yes. So we were kind of Yep, running absolutely. numbers. Yeah, so we were kind of running numbers on it. I just want to give you a quick call to kind of discuss what's the status. So it is on the market then, yeah? Because it's been on it for a while, so I was just wondering. Yes, it is on the market, and we did have a couple things, family things with the seller, where we kind of had to just strictly between us. His wife passed I'm so mid sorry. marketing, so we kind of had to put it was very sudden, which was kind of the issue. So we kind of had to put things on hold, but we are back to market. Um, we are updating our marketing material, and we will be putting everything an update back out most likely next week when it's finished, with a price reduction. Right. Well, first of all, my condolences. It must be a hard time for him and you as well to kind of walk him through this whole process. So I appreciate your efforts too, man, in this. No, thank you. Yeah, he's been um, he's about 30 years my senior, but he's still been a good friend for the past 10 years, and I helped him I sold this still to him. So, yeah, just, working to, see it through to the finish line for him. But yeah, we will be having everything updated and back to market probably next week. But like I said, biggest thing is that we did just drop the price point.
Okay, very well. So when you say you will update the thing, so I'm guessing like the rental information, or what exactly are we updating in the Sure. next week? Yep. Good question. Yep. So the financial model is the biggest thing. Okay. That will be updated in the marketing package. The competitive set, all those competitive properties, the information for them with regard to current rents, occupancy figures, concessions, et cetera, those will also be updated. And it will also have some, photography and updated videography and things like that. But the financial model is the biggest thing. Okay, and in financial model, what is Mr. Seller is looking to have there? Do you just want to exit out, kind of like conventional and cash type of offers, or is there any other He will, exits? yeah, unfortunately, he really just is not able to hold any sort of paper or get any, do anything creative on this deal with regard to any type of seller financing or anything like that. Okay. He is willing to obviously respond to offers. Like I said, we did. I know our pricing online still shows, I believe, 5.6. Correct. Yeah. We did just so you know, we will be going back out with our new package next week at 4.85, so a 750K drop. Right. Yeah, it would definitely And increase the cap rate too, I guess. So that's good. I'm sorry. I mean, the cap rate will go up to 6 almost, right? Wouldn't it? Yeah, it will. Yeah. And obviously, it the biggest thing, quite honestly, and he's actually in the process of resolving this, but after his wife passed, and she had had cancer. She was handling it. She was dealing with it. But then she got COVID, and that really threw her immune system through a loop. She had to go to the hospital. While she was there, she came down with sepsis, and after she became septic, she passed. So it was all very, very sudden. So as a result, and the reason I tell you that is I just want to give you kind of like some background so you understand. Mm-hmm. It's just the seller, and it was just the seller and his wife. Their kids are grown and moved on and living their lives, and so now it's really just the seller. And he wanted to obviously sell it when his wife was still alive. But now really just wants to sell it and move on. But unfortunately, he's really kind of been struggling with management because he does it himself. Right. And quite honestly, I think, I wouldn't ever say this to him, but I think mentally he's been a little checked out since his wife has passed. Mm-hmm. Because the occupancy isn't great. It's right around 70%. And he knows it's bad. And he knows there's really no reason. I mean, the community is beautiful. There's no deferred maintenance. It's immensely well built. I was involved back with the original developers who built the community, so I got to see it being built, and then I went ahead and sold it for them. It's incredibly well built. It's beautiful on the inside, and there's really no reason why there should be a 30% vacancy. Aside from the fact that he's just really kind of, ultimately it's unfortunate, but he's kind of just, I don't think, it's been intentional, but he's really just kind of taken his foot off the gas. Mm-hmm. And so he knows that and said, all right, I think it's time to hire a professional management company, even though I am selling it. Clearly,
with regard to the asset, the physical components of the asset, he keeps it very, very well maintained. I mean, he just late last year, I mean, it didn't even need it, but he just spent 125 grand to get the buildings repainted. I mean, they didn't need it, but again, Interesting. so he does everything to keep it really in tip-top, stellar physical shape. But he's just not good. He's not a good manager. He's not good at getting people in the door. He's not, he is very lenient with people on rents. If they're late, it's not a big deal. I see. If they need an extra couple months, it's not a big deal. So that's what we're in the process of doing right now as well, is bringing on a third-party management company. Okay. Because again, there is, I've been an apartment broker for the past 15 years, and I've sold thousands of units in Florida, and I've never seen an asset that's been, in as stellar shape as Corsica is, and in such a strong location as Corsica is, Right. and yet has such poor occupancy as it does right now. Yeah, and how far, just out of curiosity, how far is the beach from here? So the closest beach is most likely going to be Fort Myers Beach, Right, okay. Yeah, that's not bad. which is probably about 35, 40 minutes. Okay. That being said, that's like the biggest touristy beach, if you will. Bonita is fairly close by, and there are beaches there. But if you're looking for like big, drinks, bars, parties, spring break type beach, then it would be Fort Myers Beach. I see. Okay, so I just want to jot down some of the numbers you tell me. You said that they're coming at the asking price of 4.9, correct? So we reduced the price from 5.6 to 4.85 million. 4.85, okay. Yep. Okay. So yeah, I mean, what I wanted to do, I guess I will run the number on the current cap rate and see where we at. What I was thinking, if I were to able to bring, let's say, I don't know, 50% down payment or about around there, would that be of interest if you were to like kind of sell her to carry the rest 50 for a short, I don't know, like 84 months or so? Or would he still present, would want it to be? Yeah. So I mean, I'm happy to present it to him. Right. The biggest thing is he is really looking to utilize the 1031 Oh, I see. in exchange predominantly for the basis as well. And so given that if he does hold 50%, obviously, even when that amount is paid back to him, he unfortunately won't be able to, to utilize it for an exchange. He'll have to pay the cap gains on it and take it as income. So that's really the biggest thing. It's not as if he wants all the money. He just he wants to exchange predominantly for his children's purpose. Oh, I see. But that being said, we do have other conduits that would be able to provide you with approximately 50% leverage for, a fairly short period of time if you were looking for that.
Yeah, so we have a few bridge loans in mind that we can connect with. That 50% we are thinking to sort of finance that, and then the bridge loan to kind of cover the full cost and kind of go into the seller agreement with the seller for that 84 months. The other thing I was thinking, if Mr. Seller is open to it, how we do the transaction is we do it in a trust format. So we can add his family members in it, or whoever is going to be second to kin for him in that trust. So that money ultimately will go to them. There's without any gift tax or any of those taxes, just go um, to them as their property when we sell, like basically when we refinance that, get the money out, and it will be a trust deal, right? So in that sense, it's not that he will have to pay the tax, that's for sure. It will be a trust deal. We'll give him like cash right now, and then remaining cash could be in a trust sort of format. And then his sons or daughters could be the owner of the trust for the time being that we are actually paying the monthly payments, right? And then when we do the balloon, pay all the money. If it was him, he will take it, or his the next to kin basically will take the remaining. But I mean, if only he's entrusted, we can go about and have those discussion. I can have my attorney kind of chat with him if needed to kind of go over how that structure works and things of that nature. Yeah, no, I mean, I appreciate that, and I'm pretty, I, I'm, I'm pretty well versed in how that structure does work. But what I can say is, while it's not, while it might not be his priority. If you did want to, knowing what you do know now about the price reduction and, effectively what we'll be doing, and, we'll be going, we haven't taken the deal off market per se, but I just say going back to market, meaning, updated everything, pricing, financial model, what have you. If knowing what you know now, if you did want to send over a letter of intent or something like that, or just some, something that would kind of, articulate and highlight the way in which you were hoping to transact, um, I'd be happy to put it in front of them and try to potentially work something out. Sure. Yeah, I could definitely put in everything in a detailed format, kind of step by step of what sort of transaction we are looking to do, and then you can present it to Mr. Seller. The one last thing before I let you go, for the rental, have you guys gotten the management company in place? Are they has the rental income has been increased? Um, so he's actually, I believe he'll be speaking with them either today or tomorrow. Okay. Um, they're a great company. I'm hoping that whoever acquires the asset will keep them on, because, quite honestly, like I said, I've been, I started my career working in Southwest Florida, so I know Fort Myers pretty well. I actually lived there for a few years as well, while I was getting, our my old firm's satellite office up and running down there as well. So I know the area, and I know it intimately, and I know, the players in that area, and I really don't know of any property management company that is better, Okay. or better suited to handle this. So I am almost certain he is going to hire them and bring them on. And hopefully the new owner will keep them on, but obviously, that's going to be their prerogative. But he's, realistically,
that probably doesn't happen for at least another week to 2 weeks. Right. Yeah. Yeah. No, I was thinking I probably need some time. I've got to run some numbers by one of my investor partners as well to kind of see where we at in terms of number, what's the best we can do. So we kind of move from outside of the property. It looks beautiful, and that got me excited too. Plus, it's one of the best locations that you can possibly have. So Yep. I love everything in terms of that. The location, things of that is very good. It's just the numbers we need to make it work. Bringing cash at this for this asset is it's gonna be very tough. And I feel like it might be the case for other people as well. But I mean, there are big whales out there that could do all cash. But what I will do though, I will try my best to bring as much cash at the table to facilitate Mr. Seller's situation because I know that he's going through a pretty tough time. So that will I will do and also run some numbers again, knowing the current the purchase price, the updated purchase price, Yep. I guess, and then Yep. kind of get back to you probably in a couple days or so. Okay. Perfect. Okay, sounds good. Well, I'll be on the lookout, and yeah, let me know if you have any further questions. Sounds good, Adam. Thank you so much for helping me out here. I appreciate it. We'll chat soon. Absolutely. Thank you. Talk to you soon. Bye bye. Bye bye. So this property is good. The only problem I'm trying to run the numbers. I'm not getting even close, bro. The problem is the rental income. If somehow we can increase that, अगर इसको हम बढ़ा लें किसी भी तरीके से, then we will be in a green. But the problem is कि वो rental income का issue है, right? अब देखो ये issue ऐसा है कि वो खुद बोल रहा है agent. टेक्निकली एजेंट एजेंट तो सेल करना है प्रॉपर्टी तो वो कुछ भी बोल दे, वो उसका बात होती है। मगर हमको ये देखना होता है कि ठीक है एजेंट बोल रहा है कि बढ़ सकती है रेंट, और रेंट के कंपेरेबल्स हमने निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एट 70% ऑक्यूपेंसी देयर इज 20% 30% स्टिल रिमेनिंग, और 20% 100% का भी होता नहीं है। बट अगर 20% भी ऑक्यूपेंसी हमें मिल गई, देन पोटेंशियली वी कैन डू दिस डील। ठीक है, अगर 20% ऑक्यूपेंसी मिल गई तो हम ये डील कर सकते हैं तब जाके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फंस इस वजह से गए हैं क्योंकि अब हमें कुछ काम करना है फ्यूचर में और उसका रिजल्ट हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मंथ ऑफ स्टेबलाइजेशन, राइट? क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि बन हो सकता है कि बेहतर हो, बट ओनर कर नहीं रहा, फिर वो एजेंट को हायर कर रहा है, फिर वो नई कंपनी आ रही है वो काम करेगा। तो हम उसी कंपनी को रखते हैं अपने ऊपर और बोलते हैं कि हमें 6 मंथ की स्टेबलाइजेशन दो उसमें, राइट? तब जाके इस सिचुएशंस में ये मेक सेंस करती है। फिर 6 मंथ्स में हम 70% ऑक्यूपेंसी को बढ़ा के एटलीस्ट 90 तक ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा रेंटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा और उससे हमारा अगर 70% है तो तकरीबन 10,000 तो बढ़ने चाहिए, राइट? 70 से अगर आप 90% जाएँ तो आई फील लाइक देयर इज गोना बी अ $10,000 डिफरेंस इन अ मंथली रेवेन्यू, एंड दैट वुड पुश अस टू द ग्रेट स्पॉट, राइट? और फिर हम शायद इसको और भी कम कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम कम करें, लेट्स सी, बढ़ाएं 60, या तो हम 50% भी पैसे इसको दे सकते हैं अगर हम इसको रेंट बढ़ा पाएँ। I don't know how to tell you guys what to do with here, क्योंकि इसमें हैदर आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे ये होगा कि हम थोड़ा सा वेट करें 1 से 2 महीने वीक का, ताकि नई कंपनी आए और नया रेंटल सिचुएशन आए, फिर हम इस पर कोई ऑफ़र दें, राइट? ये प्रॉपर्टी तो 1 साल, कितने साल होगा इसका? 2 साल 2 साल 2 महीने 2 साल 4 महीने 6 महीने, राइट? 2 साल से ये प्रॉपर्टी लगी हुई है और कोई इसको ख़रीदा नहीं है, राइट? और ये 1 साल ऑलमोस्ट उन्होंने प्राइस कट की होगी कुछ इतने टाइम पहले। तो 4.8 ठीक है, कैप रेट ऊपर हो जाएगा, वो सब ठीक है, मगर मसला यहाँ पे आ रहा है कि ओनर को पैसे अभी चाहिए, वो 1031 करना चाह रहा है, तो पैसे अभी तो उसको नहीं मिल रहा है। कोई भी बंदा भले कितनी भी अच्छी मार्केट हो, आपको कैश 4.9 मिलियन का नहीं देगा। इतने पैसे किसी के पास भी नहीं है देने के लिए, वो ज़्यादातर लोन लेगा।
So I don't think this is gonna even move at 4.9. मगर सेकंड पोजीशन फाइनेंसिंग अगर हम करते हैं तो ये प्रॉपर्टी मूव करेगी, बट इसका रेंट हमें चाहिए अच्छा, रेंट अच्छा चाहिए। और हम यहाँ पे ये भी कम कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन इवन गो टू 7 years, या ओ इवन 5 years। ओह माय गॉड, नो वेज। या 5 साल में भी हम इसको निपटा सकते हैं, इसके सारे पैसे 5 साल। That's a very good amount. 4,000. Yeah. So I just need to see a better return, a better cash flow here. Better cash flow. 24,000 is not enough. 24,000 is not enough. Wait. No. Oh, 207. Okay. Never mind. सो हैदर बेसिकली हम इसका बस वेट करो, एक हफ्ते के बाद उसको बोलो कि माई पार्टनर हैज़ चैटेड विद यू ऑनलाइन, विल बी वेटिंग फॉर योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी। जैसे ही वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करता है, देन वी कैन रन द नंबर्स अगेन, और फिर हम देख सकते हैं। बट अगेन इवन वो अपडेट आपको सेंड कर दे, हमें फिर भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि हम रेंटल रेवेन्यू को बढ़ा पाएँ। अगर इसको बढ़ाते तो दिस डील इज़ गुड, मगर इसको नहीं बढ़ा पाते देन वी आर इन ट्रबल। ठीक है, जस्ट लेटिंग यू नो। Can you call Market Grinch Ahmed? Okay, I will see. Said by kindly check my messages in your DM. Sure, I'll check. Uh, there are a few messages. I'll start with this one. One second, let me share the right screen. Okay, this one we already talked. Maybe it's this one. Okay, so this is the house. Oh, 29,000. Oh, it's a mobile house. It's a mobile house, I can tell. It can't be 29,000. Does that look like mobile house? ओके सैयद भाई, ये प्रॉपर्टी है, हमने इसको कैश ऑफर दी है। इस पर एजेंट का रिप्लाई आया है कि हाई देयर, आई विल सबमिट दिस proposal, however I like also see the contingency of park approval. Yeah, so that's why he's asking for the park approval, because this property is आप जो है ना सिर्फ घर ओन कर रहे हैं, लैंड ओन नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। जब भी तो 29 की लगा हुआ है वो। या ये शायद पार्क में बनाया हुआ है कि, but it doesn't say properly कि ये जो है mobile house है। Take a look at this spacious Eagle States too, a community beautiful for all of the ages, lovely home, natural. This home is ready for an owner who is ready to enjoy the warmth of the community. With some updates with the start 43,000 से किया था। I don't know if it's a mobile. That's so weird. Maybe call him. I'll call her because what is park approval? If अगर mobile home नहीं है, then what is the park approval does she need? This is Natalie. Hey Natalie, this is Syed. You've been speaking to one of my partner, Fahim.
on the email for Suvani Drive property. Does that ring a bell? 522 Suwannee? Yeah, that's Yes. correct. Yes. I just have a quick question. You mentioned that you need to speak to the park for the approval. Can you help me understand what that means? It's a community that they have to go through certain steps to get approved there. They have to go through an application to live in the Interesting. community. Oh, okay. So is it has to be the owner occupied house or can it be rented as well? I'm not sure about rental. I would have to call and ask the community. Okay. And it's a mobile home, I'm guessing. That is correct. Right, right. Yeah, I mean, if you can ask about the renter, because we were coming in as a rent for this. The renters are, it looks like there are houses being rented close by, so that's why it's making Yeah, sense. But that's correct. Yeah. yeah, so I just want to confirm if you can let us know the renter if it's allowed for the rent, and then we can kind of proceed with the other calculations on that. Okay. Yeah, I Okay. will. I will contact the community and let you know. Is this number good for you? The 737 area code. That's correct. This one would work just fine. Or you can send an email to Fahim as well, that who's been on this property for this. Hello. Hi, can you hear me? Hello? It's going in and out. Let's disconnect. Yeah, so Fahim, this property is not good. It's a mobile house. It's a mobile house. Hey, sorry we got disconnected. Yes, this would be a good number for you to let me know if the property can be rented. Property can be rented. Yeah, so the problem with the mobile lands, guys, we don't own the land, we just own the house. और house की condition ऐसी नहीं है कि इसको own किया जाए. लैंड ओनर जो पार्क ओनर है वो जब चाहे आपको बोल सकता है कि भैया आप बाहर जाओ यहाँ से, और आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप ओन नहीं करते लैंड, सिर्फ घर ओन करते हो. आप घर को आप मूव करेंगे, द आंसर इज नो. तो घर को डिमोलिश करना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा. इट्स जस्ट नॉट गोना बी अ गुड आइडिया गाइस. So Fahim, unfortunately, this deal may not work because it's just a mobile land. Okay, I'll go to the next one you mentioned. Cynthia, the name sounds familiar. Cynthia, she wants to call now. I sent her one mail and she wants to chat on the call. Sure, sure. I should be get going, but I'm waiting for one call. After the call, I have to. Thank you and no problem, she said. Okay. After the call, I have to get going, but I can stay as long as I can before that. Why is it not ringing? We have trouble having connecting your call due to busy network. Try again later. Hello. Hello, is this Cynthia? Yes, it is. Hey Cynthia, this is Syed. I believe you've been speaking to Fahim over the email for the property at Buckner Street, Buckner. Yes. Yeah, so we were kind of running the numbers on this a couple of days ago. This kind of makes sense. I wanted to know if you have any rental information on this. Is it currently rented or vacant? It's vacant right now. It was rented for not $1,000 a month. Okay. Okay, yeah, because I guess we got it on the Zillow around the same amount.
Do you think is it up on the market right now? Like it's or is it like below market rent? Is the house on the market? No, no. Is the rent below market of $1,000 or is it like at market rent? It's at market rent. Yeah. Yeah, because basically we were thinking to DSCR on this, and their ratio is low enough that they won't approve for us. Is Mr. Seller only looking for cash offers, or can we come up as a creative as well? Well, she's not going to do a creative offer. She just wants to do a traditional transfer of ownership because she wants to get from under the property. Okay, So she's not interested in doing an assignment or an assumption or anything like that. okay, okay. Yeah, because we were kind of maybe coming at 20,000 over, but if she's not interested, I will work on the cash number, and then kind of get Yeah. back to you on that. Yeah, Anything? present me a cash offer that I can give to her. She'll be happy about that. Sure. Anything else I should know about the house? From the pictures, it looks in a great condition, no issue whatsoever. Is this your cell phone? I can send you a video of the property. Yes, you can. I would love that. Yeah. Okay, I can send you a video. Okay. Yeah, let's do I'm that. getting ready to walk into. I'm getting ready to walk into a meeting. Sure. Give me about 5 or 10 minutes, and I'll send No you worries. the video of the property. No worries. Take your time, Cynthia. Thank you for taking my Okay, call. all right. Chat soon. Bye bye. Bye. So this house is not they're not accepting seller finance, but the cash would make sense just fine. Okay, this is the house is in a great condition. I don't think even a single dollar needed right now. प्रॉब्लम ये है कि $1,000 का रेंट at 119 is not gonna cut it, right? हमें कम से कम at 119 हमें चाहिए रेंट almost 700 का, oh sorry 1700 का या 1900 का, तो जाके हम एक 1% रूल पे आएंगे. So it's not gonna sell conventional. ठीक है. कोई भी बंदा जो इन्वेस्टर है वो इसको नहीं लेगा इतने प्राइस पे कभी भी, क्योंकि इसका रेंट ही इतना कम है. ठीक है. तो ही इज नॉट गोना मेक मनी, इनफैक्ट ही इज गोना लूज मनी एट दिस. ठीक है. कैश ऑफर के लिए हमें आना पड़ेगा काफ़ी बिलो, सो दैट हमारी जो परचेस प्राइस है वो मेक सेंस करे 1000 के हिसाब से. ठीक है. तो 119 पे ये घर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.7, 83,000, राइट. अगर 83,000 पे हम उसको आते हैं, 83,000 हमें लोन मिलेगा अबाउट 1200 का. Still not gonna cut it. Still not gonna cut it. We might need to do a little. We might have to go with 80,000. We might just have to go with 80,000. Let me confirm the rent. I actually just BS her about the rent. I didn't even know that. Let me confirm it's actually the market or no. Street address. It is at market. Wow, that's pretty low rent. For 3 bedroom, 1 bath is a low rent. Yeah, Fahim, go with 80,000 as a cash offer, but don't send her right now. Okay, give it a day. Don't even send it tomorrow. She's gonna send me things today. I'm gonna tell her I'm gonna run numbers tomorrow and get back to you. But I'm not gonna get back to you, to her tomorrow. I'm gonna get back the day after. Okay, so 80,000 would be probably the best offer, where we can cash flow. Okay, but give it a couple days break. Let me see. Eamon has sent a message. Sir, some time ago you spoke on a call with the agent named Jen who offered us Section 8 properties. One of those 5 could be purchased individually while they were a part of a single. The total price of CC I offer 10
10% down. Ahmed calculated the monthly payment for me and I proposed 1000 per month. Jen responded that she could not agree to this. Then I increased the 15% down payment. In response, she raised a major concern that the three property already have existing mortgages and she believes the monthly payments on this loan exceeds 1000, meaning the offer would not be sufficient. Yeah, makes sense. Finally, I suggested subject to mortgage takeover offer. I asked Jen to provide the exact monthly payment and outstanding balance on those mortgages that we can review the numbers, and she sent this. Okay, well, it's a bit of a work, guys. Lease ends in August 2026. August, Jan. K, 190K, 93K, 100K. I don't know, Eamon, if you can hear me, but if you can, there's a recording you can watch on this on your numbers. The S 8 3 I guess 90K, 93K, 100K. Go with the cash offer on this. Agar if what if we go with the cash offer? Cash offer. The PP is low enough for it to qualify for cash. Plus, we can also check the rent info for seller finance. Send me full address on these properties. Okay. So Eamon, basically I want the full address on all three properties. We can run it as a cash and we can run it as a seller finance slash mortgage takeover. Okay, I texted you, so if you see this, let me know. Okay, I'll take the last question, guys. I think that was Harry. Can you check my DM? We are close to the end of argument with the agent. Can you call Michael Grinch Ahmed? Dude, Michael Grinch was so rude. I mean, I don't know if something is even left there, but let me see. 2.65 looks like a brand new property. Inside, no inside. Okay. Purchase price 2.695. Yeah, closing 20 days. No, Heather, closing cannot be 20 days, bro. Closing on these property takes forever. Okay, bank has to do work. Plus, we have to do the inspection. Inspection itself is gonna take like, I don't know, 1 week, 2 week. So इसमें हम closing cost. I think what I will do is that I will work on the, I have to work on the LOI on the commercial properties because this is wrong. We cannot do 20 days closure. Contingent appraisal contingent to be removed. Wait, ये उसकी email है. Oh, never mind. Okay, never mind. ये उसने email भेजी है अच्छा. Contingencies appraisal contingent to be removed or limited for a short time like 7 to 10 days. Financing structure, buyer obtained the institutional financing for a majority of the purchase. Seller carryback not exceed 20 to 30% the purchase price. Seller note to be secured. Seller note to be secured at the second deed of trust. Okay, that's good. Seller carry at the interest rate of annual. This is not gonna make sense, bro. Everything is wrong in this deal. इसको 8 से 10% annually interest चाहिए. इसको कैरी पोजीशन करना है only 30% मैक्सिमम, जबकि आपको पता है कि सेकंड पोजीशन करने में हमें कम से कम 40% चाहिए होता है एक्विटी ऑफ द प्रॉपर्टी, मगर वो 30% दे रही है सिर्फ. प्लस 12 महीने मैक्सिमम, नो रीपेमेंट पेनल्टी, मंथली पेमेंट, ब्ला ब्ला, फुल फाइनेंशियल. No, this is not a deal, bro. This is not a deal.
This is not even close. I think what it is, ये न्यू कंस्ट्रक्शन मुझे लग रही है. आई थिंक ये न्यू कंस्ट्रक्शन है. um, या आई थिंक ये न्यू कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि उसने रीहैब करी है प्रॉपर्टी या फिक्स करी. न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब है कि इसने ज़मीन से लेके ऊपर तक सब नया बनाया है, कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक सब नया बनाया है. तो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के साथ मसला ये होता है कि वो लोग प्राइस से पैसे कम नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना लोन होता है, उनको फ़ौरन निकलना होता है लोन के साथ. तो जब भी वो 12 महीने की आपको का टाइम दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दिस इज़ नॉट अ डील. दिस इज़, आप देख सकते हो 1,000 दिन से, आई डोंट नो हाउ मेनी 1,000 दिन होते हैं सालों में, बट मोर देन 3 साल, राइट, मोर देन 3 years. ये भाई साहब नहीं जाएंगे कहीं, ये लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, दैट्स इट. आई थिंक आप इस पर टाइम वेस्ट भी ना करें, क्योंकि आप किन किन बातों पे नेगोशिएट करेंगे. इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, फिर टर्म पे नेगोशिएट करेंगे, फिर क्लोजिंग टाइम पे नेगोशिएट करेंगे, फिर इसकी परचेस प्राइस पे नेगोशिएट करेंगे. एवरीथिंग यू हैव टू डू इज नेगोशिएट. फिर सेलर कैरी पे नेगोशिएट करेंगे. इट्स अ बैड डील ओवर टाइम. आप हम लोग करने को तो हम नेगोशिएट सब पे कर सकते हैं, मगर वेस्ट ऑफ टाइम है. आपको इससे बेहतर डील मिल जाएंगी क्रैक्सी पे देन दिस. ओके. यस, शी सेइंग कंफर्मिंग. यार किस चीज़ को पीओ सेंड करना था? लॉरेंस स्ट्रीट वाला कैश वाला, ये तो आई थिंक हैदर की डील थी. हमाद कौन सी डील पे पीओ एफ सेंड करने का बोल रही हो? क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है इस लड़की से. ठीक है, उस लड़की ने बोला था कि मैं आपको फ़ोन करके कुछ करके बताऊंगी इस तरह का. सॉरी, आई एम लुकिंग एट हमाद बाय द वे. हमाद्स मैसेज. Screen not showing? Is it showing now? This sounds familiar. Memphis, Tennessee. इसकी okay. 342 days. What is up with this one? Can you call this agent? She's not responding now, but we are very close to 52K agent. Offer 52K. Agent is at 60K. You have said last time we can do 56, but I'm not able to present this as she's not responding. Okay, I'll do this last one. 80K is the asking. $80K times 0.7. Why did I do that? Yet even the 56K, I worry that there is work in this property. एक तो पिक्चर इसने इतनी ख़राब लगाई हुई है. I mean, किस चीज़ के इसको पैसे दे रहे हैं मिस्टर सेलर? Look new though. I think it looks okay. Yeah, I guess ये 70K में 56K में मान जानी चाहिए. वो 60 पे पहुंची हुई, हम 65 पे हैं. Okay, let me call. Oh, is it Cynthia again? इसी को तो हम बात नहीं कर रहे थे अभी. Cynthia Edwards. No, it's a different agent. The Cynthia I have is 4429. Yeah, I think it's different. इसका नंबर नहीं लिखा हुआ. Interesting. इसने अपनी कंपनी का नंबर दिया हुआ है. So ये रही मिस सिंथिया. ज़िलो पे
rental pay Cynthia Edwards इसके फेसबुक में देखने हो सकता है नंबर Cynthia Edwards Cynthia Edwards तो वो दूसरा नंबर बता रही है जो आपने भेजा है 5255 आई थिंक ये जो नंबर आपने भेजा है वो 5255 ये इसकी कंपनी का नंबर है सिंथिया का अपना नंबर नहीं है सिंथिया का अपना नंबर ये वाला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है Yeah, this is the one. Just get this from her post, yeah. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Melrose Street buyer. Thanks. Please stay on the line. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Hey Cynthia, hope you're doing well. I believe we have been speaking with Hamad on this deal on the property listed at Melrose Street. I feel like the last offer we have sent out was around 52K and you requested for 60. I was hoping to make this deal work, so I was thinking we can cover the closing cost from the Mr. Seller side as well, so that he will save about a couple thousand there. So we are kind of coming up at the same time. So let me know if 52,000 for this property plus the closing costs that we will cover. Let me know if that excites Mr. Seller. I will love to kind of close this deal as soon as possible. Thank you. Chat soon. Bye bye. Let's hope that we can get to the 70%, but 30% off, because here she did mention the limited renovation is needed. Agar renovation needed hand, then this is not a good deal at 70%. Sorry, at 30% off. We might have to get a little bit more. Oh, she's calling. Hello, this is Saya. Oh, yeah, you called regarding the Melrose property? Yes. I was talking to Hamad that you've been speaking to. We were kind of running the numbers on it, trying to just see where we can make this work in terms of numbers. So you mentioned, I think, last conversation that seller is firm at 60K, correct? Yeah, you didn't say it was okay, so I never sent it to him. Sorry, you got cut out. Can you repeat that? Hold on a second. Sure. He said, Hi, I can hear you now. you said, what's that, 60K? Yeah, we were at 60K last. You mentioned that seller is firm at that. Mm-hmm. For the Melrose Street property. Yeah, did you put in your offer for 60K yet, or what?
No, so we submitted the offer for 52K, and you mentioned the seller the best they can do is 60K. So what I was thinking to If he do. wanted 70, since he wanted 70, I know he's not gonna go to, he has a loan on it with his credit union. So, Okay, I see. yeah, he's Well, gotta at least pay that off. how much is the loan, if you don't mind me asking? I don't know, and he's not providing it. Okay, well, I can check the public Yeah. record, but sometimes it's wrong. Um, The house is worth 60,000. It's worth that. house is And you worth how guys gonna much? go 60. It's at least, it's worth more than 60. But he's not, I know he's not, I'm not gonna even suggest he go lower than that, because somebody will give 60. If I drop it to 60 right now, I can get it. Which is probably, I'll probably drop it to 70. Because I know he'll take 70, somebody will offer 60. So let me just modify my price and get the right buyer. Right. And just out of curiosity, is it something like major need to be done on this property? It looks like it's been on market for a while. So I wonder if there's something that needs to be fixed. The pricing for one is with, the main thing is it needs a condenser, touch up paint, got carpet, so the carpet probably needs to be replaced. The Okay. electrical's fine, the furnace is there, the roof is fine, it may be a little rotten wood, but for the most part, you're not gonna be out of much money at all for that property. Okay. 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 Yeah, because at 80K and it's been on the market for almost a year, I feel like there might be. I think if you wanna go ahead and submit that, I gotta take this other call, let me know Sure. what you think about the 60,000, okay? Sure, I'll submit the offer on that then. Thank you. All right, thank you. Thank you. Yeah, I mean, she's saying it needs to change furnace and couple more things. She mentioned the carpet. So if you remove the carpet, it gotta have some issues with the structure. So you might need to do the new, because जिन लिविंग रूम में कारपेट होते तो उनके अंदर के बोर्ड दिखाने वाले नहीं होते. दिखाने से मुराद क्या, रहने वाले नहीं होते उन पे. तो उसके एक डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं जो जिसको कारपेट की ज़रूरत नहीं होती फिर, राइट. वो बिल्कुल वो प्रूफ होते हैं जिससे पानी नहीं गिर जाए तो ख़राब नहीं होगा. तो एनीवेज दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू स्टिक एट आई बिलीव 52 इवन इट्स नॉट गोना मेक सेंस ब्रो. अब वो बोल रही है कि लोन है इस पे, तो आई डोंट नो कि कितना लोन है. लेट मी चेक. या तो हम सिर्फ लोन पे करें एंड दैट्स इट, गेट द हाउस फॉर फ्री टाइप थिंग. अगर लोन close to what we are asking for. $33 बोल रहा है, 79 की प्रॉपर्टी है. Yeah, I think stick with 52K. I guess go with 50K. Go with 50K and tell him I'm gonna cover the closing costs, and then go from there. Or just move on, right? Because from the sound of it, and again, 365 days, almost a year, there has to be something wrong with this property. It's not as easy. 80,000 की लगी हुई है और कोई ले नहीं रहा. I almost guarantee there's something more happening with this. कि ये 2-3 दफ़ा अंडर कॉन्ट्रैक्ट गए होंगे, सेलर बायर गया अंदर, कुछ बड़े मसले हैं, वो बैकआउट हो गया. So stick at 52K, 50K with closing costs, and then send the offer. Okay. If she doesn't agree, that's okay. Go with the next person, next property. इस पे सेल्फ फाइनेंस नहीं चलेगी क्योंकि इस पे अभी काम है करने का. तो अगर आप 50K पे इसको लेते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट पे करने के बाद आपको तकरीबन 20 से 30,000 लगाने पड़ेंगे उसको दोबारा बेहतर करने के लिए. And then we'll go from there. Okay. All right, guys. I guess this probably should be the end of it. We are more than the 2 hour, almost 3 hours now. Yeah, it's yeah. I guess there was only 2 property that I need. I need to make a LOI for Heather and a cash offer for Lauren. Okay. All right then, guys. I will see you guys tomorrow again. Hopefully, I'll be on time this time because I don't have to go to hospital.
So I'll see you guys tomorrow, inshallah. We'll go from there. And good luck, everyone. Again, we're getting very close. कुछ properties under contract आ गई हैं, कुछ properties में सिर्फ contract भेजना है. We are very close. I got disconnected. What happened? Anyways, guys, I was just ending it here that हम बहुत close आ गए. कुछ काफ़ी students की properties under contract हैं, जिनकी नहीं है वो उनको contract send करना है, right? So it's very good. We're going good as a community. We should be able to get something done very soon. So I'm excited. Inshallah, I'll see you guys tomorrow. Okay, bye for now. Okay, TikTok and YouTube. Any last questions? I'll answer. Bro, I also have one agent named Hassan Ali. He listed his price at 60K. I offer him 42K. He wants 50K. I send it to Harry. Yeah, 60K. His listed price is 60K. 60K times by 42K should be the 42K should be the last I should come. Okay, sorry, I got this sidetracked. 42K would be the best offer, you said, and agent wants 50K. No, we have to go 40K, 42K. A couple reasons. One, I still haven't looked at the property, so I don't know कि property में कितना काम है. ठीक है, number one. Number two, we have to have at least 30% off. जिस तरह वो आपको 50K कर रहा है, वो और बंदों को भी कर रहा होगा, मगर वो नहीं ले रहे, राइट? क्योंकि कोई भी और अगर लेना चाहे तो इन्वेस्टर खुद जाता है, उसके पास बोलता है मुझे 10,000 का ऑफ दो, वो बोल देगा हाँ, एंड देन वो फिर आपको काट देगा बीच में से और उसी के पास चले जाएगा. House is in excellent condition. Okay, that's a good point. तो इसका मतलब है कि we have to fix him at the 42K. Tell him 42K cash offer. We'll close quick. We'll pay the closing costs. You have to do it, right? Make him look better, and then go from there. Did I offer him seller finance? अगर seller finance आपने offer नहीं करी तो बिल्कुल करो. It's going to be a great seller finance deal. ठीक है, great seller finance deal. बट अगर नहीं कैश पे वो अटका हुआ है तो कैश 42 बोलो, उसको बोलो कि मैं क्लोजिंग कॉस्ट पे करूँगा एक्सेप्ट एजेंट कमीशन के अलावा. Okay, alright guys, I will let you go. TikTok, if you have any other questions you can DM me. For YouTube, you can comment here as well. I'll see you guys tomorrow, inshallah. Take care. Take care, Hussein. We'll see you later. I will send. I have to do something on your offer, so I will do that today as well, as soon as I have time in probably a few hours. Okay. Take care. We'll see you tomorrow. Bye.